और लाइक बीच में फिर आके बदल दो, उसको वो नहीं कर कितना टाइम पाएगी। लगेगा अलोन को? अलोन अब 7 o'clock आएगा, तो 6:25 जाएगा, 7 o'clock आएगा। 6:50 या फिर एक काम 6:30 करो, जाएगा।
We're live. Yes, we are live. Okay, so welcome everyone to the semifinals of the Valorant tournament. It's between Kaya J and Awesome Senpai Society. And for today's casting, we have AK614 and also we have Ethereus. So give it up for them and let's start the tournament. Thank you very much, Kai RJ, for the brief introduction. I'm pretty sure that the teams have make sure that they are practicing pretty well and they're ready for the matches. And as we can see that they have stated already that they're ready for they're ready for the match. So I think we should be starting soon. We're just requesting everyone who's watching the stream to just wait for a moment. And we can definitely see from the chat itself that like there can be seen a particular part of enthusiasm from both the sides. Just to ask, whom do you think is going to win this semifinals? Is it going to be Team Eternus or is it going to be Team Tourmaire? Just post it on the comment below. Well, yes, and guys, just for your information, आज के जो हमारे matches रहेंगे, the maps specifically, they are going to be Bind, Breeze, and Icebox. And for the first map itself, as you can see on your screens already, Bind is going to be there. And Eternus is starting on the attacker side. So the team TM, I'm just gonna call the team TM. They have picked the map Bind. So let's see. Being honest, I haven't seen these players play, but जैसा कि हम बोलते हैं कि जो map pick किया जाता है, that is the one map जिस पे वो specific team confident होती है. So yeah, let's see what kind of gameplay we are going to have to watch. Absolutely correct, and I am pretty sure that both teams will perform spectacularly, considering that the first map would be Bind itself, I believe. Bind, right? Yeah. Yes, it is. Yeah. Yeah. So Bind, as we all know, is a huge place for the defenders to set up their traps, and also for particular duelists like Raze and Jet to show off their skills. So we have to see how these teams coordinate amongst themselves and make sure that they win this tournament. So to all the teams out there and to all of the supporters, we wish you all the best, and I believe we shall be starting it soon. Guys, so do we start? Yeah, we're gonna start now. All right, we're gonna start now. So as we begin, I'm pretty sure that we might get to see certain traps from both teams. Oh, we already see that the Jet has been locked by Void Eternus. And it's an insta lock. Let's fucking go. Yeah, we all know that Jet mains are very popular for the insta locks, but let's see how the locks work here. It's the map Bind, so I'm pretty curious about some race picks. Yeah, I I'm wanna see also some looking. race game. Yes, I'm also looking forward to Raze. And yes, Chamber, which has been considered as a big replacement for Jet. Let's see if he comes into play or not, because Chamber is very well known for his ability of traps as well as for his opping skill. So let's see how he comes here and how does teams put into emphasis. We also get to see Brimstone coming here. As we all know, the Brimstone is a particular agent which is very choosy among the teams, and Bind is a particular map which is used here. Yes, we are live. We also get to see. We're gonna get to see some. Okay, so we're gonna have two. Select your agent. Okay, some interesting picks around here. This time around, we're gonna have. Thank you very much. One recon, a controller, and a sentinel
from Team Tourney, I'm gonna have a duelish. Two Sentinels. Yeah, sorry guys, I was a bit away because of my internet issues, but I'm back now, and yeah, the match has already started. Sorry for interrupting if I did, and yes, okay. On the side of Eternals, we have a double Sentinel setup coming in with a Chamber and a Sage, while the team TM have two duelists, that is going to be Blackstar with Drena and Killua on the Jet. उसके अलावा हमारे पास दोनों ही टीम्स में एक सोवा, एक चेम्बर एंड एक ब्रिमस्टोन अवेलेबल है. वाइल मैं देख सकता हूँ कि रेना की जगह यहाँ पे टीम इटर्नस ने सेज लिया है. तो लेट्स सी जो इनके स्ट्रैट्स के अंदर डिफरेंसेस आएंगे. एंड एक जो प्लस पॉइंट रहता है फ्लैशेस का, जो रीना की गेम प्ले के साथ आता है गेम के अंदर, वो एडवांटेज, वो प्लस पॉइंट यहाँ पे अटैकिंग टीम के पास, टीम इटर्नल्स के पास किसी भी एजेंट में अवेलेबल नहीं है. So let's see what kind of strats they have in their mind, because I think on a map like Bind, like when you have to clear the close angles, when you have to push the site, and you know the angles like हुक्का एंड यू हॉल, वहाँ पे फ्लैशेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा एक बॉटम एज है. बट देन अगेन लेट्स सी, अगर उन्होंने अपने एजेंट्स पिक किए हैं तो कुछ सोच के ही पिक किए हैं, और मैं एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ उनकी अटैकिंग देखने के लिए. Yeah, absolutely. Because main part ये है कि although they have Reina, who's very well known for their plays among the blinding part, but we also get to see कि यहाँ पर दोनों टीम ने सोवा के ऊपर डिपेंडेंस दिखाई गई है. But if we have to focus upon the VCT that is happening around right now, most of the teams have chosen none other than Fade instead of having Sova. So I was also expecting Sova here somewhere, but right now they have already begun with Sova. So let's see how it will work. And now we get to see Killua with the first headshot, and then now Killua is tagged, and let's see how it works. We get to see Team Eternus coming inside the side, and now both the teams are waiting. Oh, he crossed it around. He can just kill him. And yes, it has been killed. Now we get to see a post-plant situation here by Team Eternus. Let's see how Team Tourmaire will put into emphasis. Blackstar being very careful here, knowing that it is a 4v3 situation, and we already have Killua, who's pretty much low in this match. So what do you think about it, AK? How do you think this team will emphasize upon, considering how Killua started with the first kill? Well, they indeed have the aim in that Jet, but यहाँ पे मैं फिलहाल राउंड की बात करूँ तो बैक एंड फोर्थ यहाँ पे किल्स निकाले जा रहे हैं. यहाँ पे किलुआ ही बचे हैं एक 1v3 सिचुएशन में, बट ही इज ओनली गोइंग टू बी गुड इनफ फॉर दैट फर्स्ट किल. इसी के साथ फर्स्ट राउंड जो है वो अटैकिंग टीम के पास जा चुका है. तो जो कि मैं बोल रहा था कि बिना फ्लैशेस के एंट्री कैसे लेंगे, तो इनका जो प्लान था वो यही था कि एकदम से बस डब्ल्यू गेमिंग करके घुस जाएंगे. स्पेशली जब हमको देखने को मिला कि वहाँ एल्बो के अंदर उस ड्रोन को क्रॉस करके उन्होंने किल निकाला वहाँ पे. दैट वाज प्रीटी क्रूशियल किल ऑन दैट सोवा बाय द ब्रिमस्टोन देयर. आई थिंक दैट इज माइटी. यस, दैट इज गोइंग टू बी माइटी. एंड इसी के साथ फर्स्ट राउंड सिक्योर कर लिया. एक आराम से एक बाय राउंड हमको देखने को मिलेगा, वाइल टीम टीएम इज गोइंग टू बी ऑन अ निको. एंड किलुआ के पास एक शॉटी है, और उस शॉटी का कमाल दिखाएंगे. वहाँ पे एक फ्रैग निकाल लिया गया है, ट्रेड कर लिया गया है, और एक स्पेक्टर भी सिक्योर हो जाएगी. बी साइड को यहाँ पे कंप्लीटली ओपन छोड़ दिया गया था रीटेक के लिए. ऑफ कोर्स दे डिडंट हैव एनी वेपन्स. वेल, सुसाइडल मिलास इज इन द पोजीशन, ही विल मिस हिज शॉट्स विद द हेड हंटर. यहाँ पे आइस कोल्ड भी आ चुके हैं, उनकी यूटिलिटी जरूर अवेलेबल है. यहाँ पे कोशिश करेंगे जितना ज्यादा डैमेज कर सके इकोनॉमी पे उतना ज्यादा करें. यहाँ पे जेट भी आ चुके हैं. किलुआ ही इज ऑन हाफ एचपी, बट आई थिंक ही हैज द गन. वो गन उन्होंने अपने टीममेट को दे दिया. यहाँ पे And now we are getting to see the post-plant situation, and we can definitely see that they are being very aggressive here. And we have only one player left, and how will it emphasize? No, it goes to Team Tourmaire already. Oh. I must agree that Killua has put a huge emphasis by taking Shorty, and it was very much unexpected by Team Eternus, I believe. What do you think about it, AK? वेल इंडीड इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड. लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से रीटेक आया है, जिस तरीके से वो साइड के अंदर घुसे वहाँ पे सीटी के एंगल से दो के दो प्लेयर्स, वन वाज आइस कोल्ड एंड वन वाज द ब्रिमस्टोन विद द स्पेक्टर. उन्होंने सीधा जाके ट्यूब का एंगल क्लियर किया. एंड देन द हेड हंटर गाय आर चेम्बर कमिंग इन फ्रॉम हुका
तो वहां से उन्होंने जो एक किल निकाला, दैट वाज प्रीटी क्रूशियल। एंड यहाँ पे अब इको पे आ चुके हैं इटर्नस के प्लेयर्स, और अब बाय राउंड है यहाँ पे टीएम के हाथ में। सो लेट्स सी यहाँ पे किस तरीके से प्ले अराउंड करते हैं। Yup, absolutely. I think उनका presence पहले से उन लोगों को पता चल गया है. So now there is a smoke and a shot, and let's see how Eternus will put emphasis upon it. Let's not forget कि B side almost cleared, बस एक chamber बाकी है, but उन लोगों को तो पता ही नहीं है, obviously. So let's see. We can see that DT Eternus is slowly clearing showers, but he less that he know that there's Killua waiting for him. On the other hand, we also get to see Ice Cold coming back to B. And Killua comes with a kill. We also get to see Black Star. Oh, but Black Star gets punished for whatever has been done. So AK, what do you think? How will this match go? Considering that although their Reina is there, but down A. अभी Reina का जब emphasis नहीं होता, so how do you think it will go with just 30 Sova seconds left. and a Jet? Well, it is going to be a bit difficult, as we can say that our Brimstone is already in the position and Sova is on 1 HP. यहाँ पे जो recon डाला गया है ज़्यादा information उससे नहीं मिलेगा, but the Brimstone gets revealed. यहाँ पे एक kill ज़रूर मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे Tourney player low HP पे हैं और void kill ज़रूर निकाल लेंगे। एक counter recon आता हुआ information निकालने के लिए time बहुत ज़्यादा कम बचा है। Suicide Windows coming in with a beautiful kill and Ice Cold finishing off, showing a bit of Sova def, और इसी के साथ एक और round की lead यहाँ पे ले जाते हुए। Well, जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी पिछले राउंड में शुरुआत हुई थी, टीएम के साइड से थोड़ा सा हल्का लग रहा था, बट नाउ जिस तरीके से यहाँ पे फ्रैग्स निकाले जा रहे हैं, ट्रेड्स लिए जा रहे हैं, काफी अच्छा एक गेम प्ले जो है सेटअप हो रहा है। इनफैक्ट दोनों ही टीम की तरफ से एक अच्छा गेम प्ले सेटअप हो रहा है, बट देन अगेन दिस इज द वैलोरेंट एक्शन वी आर लुकिंग फॉर इन टुडेज गेम। Absolutely, and now we can see a timeout coming from Team Eternus. So let's see how they will put in the emphasis कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, because as we have said before, they already have Reina, which is a huge advantage for them. And इन लोग के पास Reina नहीं है, instead they have Sage. So उन लोग को अभी ये put करना पड़ेगा how they are going to put forward with the Sage and the team composition without a blind, and how they can play on a post-map situation. Indeed, and as far as the Sage is concerned, yes, they can get a fast plant on the A site, but जैसा कि आपने भी बोला कि वो जो रेना का जो एक फ्लैश का मोमेंटम रहता है फुल एंट्री करने का, वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रैट्स अनफोल्ड किए जा सकते हैं। ए साइड पे जैसे कि मैंने बोला कि फास्ट वॉल कर सकते हैं, इवन ऑन द बी साइड यहाँ पे हुक्का की तरफ से जाके अगर ऑक्टागन को वॉल ऑफ कर देते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक चीकी सा गेम प्ले अनफोल्ड कर सकते हैं। हालांकि सैंडविच होने का ज़्यादा चांस रहेगा, बट देन अगेन दे कैन अनफोल्ड सम प्रीटी गुड स्ट्रैट्स, एंड वही स्ट्रैट्स सोचने के लिए यहाँ पे इटर्नस ने ये टाइम आउट कॉल किया था, जो कि अब खत्म हो चुका है। वेपन्स थोड़े से मिक्स्ड हुए हमको देखने को मिलेंगे, 3 राइफल्स, एक शेरिफ और एक कंप्लीट पिस्टल ऑन डेसेक इन द स्टेज। एंड यहाँ पे ड्राई पीकिंग की जा रही थी वॉइड के द्वारा, उनको फटाफट से पनिश किया जाएगा। एक ऑपरेटर के साथ किल निकाल ली गई है, ऑलरेडी मैन एडवांटेज भी यहाँ पे जा चुका है टीएम के पास। एंड कॉन्फिडेंस देखिए, जैसे एक किल आया, फॉरवर्ड ग्राउंड कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे इन्फो भी मिल चुका है कि 2 प्लेयर्स एटलीस्ट आ रहे हैं ऑक्टागन से। एक प्लेयर का उनको फुटस्टेप आ चुका है, दूसरे प्लेयर ने और रिकॉन किया है। किलुआ इज इन हुक्का, तो यहाँ पे अगर प्लेयर्स एंट्री करने की कोशिश करते हैं काफी गंदे तरीके से सैंडविच हो सकते हैं। एंड सुसाइड विंडोज once again it has second already One happened. enemy Now remaining. they are Yeah. left with 1 player, and let's see how Mighty will how Mighty will react upon it. I think he might be saving, but little does he know that Blackstar is waiting for him. Let's see how it will be. Enemy down. And Blackstar goes down. Taken down. We get to see some amazing one taps coming from none other than Mighty Eternus and Hero Days. The safest thing to seconds do left. right now. Oh, here's the chamber, but he's not aware that the site is completely clear. And yes, I think सीधा जाके प्लांट ही देंगे यहाँ पे, but बैक ऑफ साइड आ चुके हैं चेम्बर, एंड यहाँ पे फिर से शॉट्स मिस करते अपने हेड हंटर के। और यहाँ पे तीसरा फ्रैग आ चुका है माइटी रनर के पास, जिसके साथ प्लांट दे दिया जाएगा। किलुआ थोड़ी लो एचपी पे है, पर क्या यहाँ पे किल निकाल पाएंगे, और ज्यादा लो हो चुके हैं। एंड
he will get the headshot. यहाँ पे काफी अच्छा try Mighty Eternals की तरफ से, but then again TM getting yet another round and getting a lead of 3 more rounds. So माफ कीजिएगा 2 more rounds. Absolutely, and we can easily see how Team Eternus tried to dominate in the first round, but now Team Tourney is coming with a comeback, and it is a huge implication. I have to agree, AK. They always say that once you have the assault rifles and all, then starts the real show, and we are definitely seeing the real show right now. Well, indeed, but the Jet, he is going to be using the Blade Storm from the side of Team Eternals. That is wide. बाकी सब players के पास rifle जरूर रहेगी, but the key factor with Team TM right now is Suicidal Midas having that operator and getting those frags, but he is not in the right position right now as a Team Eternals is moving to A side. सारे के सारे players थोड़ा बहुत दबाते हुए आगे आ रहे हैं. मॉली थोड़ी सी गलत की गई है. Eternals माफ कीजिएगा वॉइड यहाँ पे अपड्राफ्ट करेंगे. एक ही ब्लेड बचा है उनके ब्लेड स्टॉर्म अल्टीमेट का. आई थिंक पूका को माफ कीजिएगा यू हॉल को क्लियर किया जा सकता है अपनी अल्टीमेट के साथ ब्रेमस्टोन की, बट यहाँ पे ब्लैक स्टार आएंगे फॉरवर्ड और एक किल निकाल लेंगे सेज के ऊपर. सो दैट इज द हीलर गॉन एंड ब्लैक स्टार का इनफो साउंड के साथ, लेकिन एक और किल निकालेंगे. Black Star coming with the perfect flank possible, but Black Star is low. So let's see Black Star कैसे emphasis करते हैं, and we get to see another shot coming from DD Eternus. Now Black Star is trying to be very cautious here because he already knows that he's low on HP, and Killua taking a look from the heaven, trying to get all the information possible. Meanwhile, Black Star coming again with the flank. Let's see how Black Star and Killua goes down. Last player standing. Now we get to see 2v1 situation, and now this round has been won by Team Eternus, and we get to see I'm sorry, I believe I got some technical issue, but yeah. So coming back, we can definitely see that Team Eternus winning this round has put up a great impact on the economy, and for this we can see a huge presence coming from Team Tourney on B side, but now they're again focusing back on A side. So what do you think about it, AK? What do you think? Most people talking about Chamber being the replacement for Jet. What do you think about it? Well, for Oppers that is going to be the case, but Jet brings that entry material. And यहाँ पे फिलहाल मैं मैप की बात करूँ तो Black Star फॉरवर्ड आ चुके हैं. यहाँ पे दो डाउन करेंगे, ट्रेड हो जाएंगे, but he has gotten a man advantage for his team. लेकिन उसको उसी टाइम इक्वलाइज कर दिया जाएगा with the resurrection coming in now, right on to Killua coming with blade arms, but it got cancelled. Yeah. Oh, that was Okay. close. Yup, that was indeed a close call. Now we get to see Brimstone using his ult. We can definitely see that Team Eternus has gained control of the site. But now Suicidal Meters is definitely working upon it, trying to gather all the information possible. Let's not forget that it's a 2v2 situation, but Ice Cold is very low. One enemy remaining. Last player standing. Now we get to see Eternus, the Void Eternus, and the round has been won by none other than Team Eternus here. Indeed, I mean they're calling the fakes correctly. पहले A पे जाके उन्होंने अपना position दिखाया and then they went back to B. हालांकि Black Star got 2 kills, but फिर भी उसको cover up किया जिस तरीके से site में entry ली. I mean they're proving the fact that they actually don't need the Reyna when they have the momentum right in their gameplay. और यहाँ पे जिस तरीके से last में Void ने वो clutch निकाला, well already उनके opponent player low HP पे थे, but a clutch is a clutch. और इसी के साथ जो map points जो scores की lead थी वो equalize हो गई है and 3-3 का scoreline हो चुका है Ethereus. Yeah, absolutely. I think that timeout did work accordingly, because उस timeout के वजह से
हम लोग को इतना टाइम मिला है कि दे कैन डिसाइड कि कैसे हम लोग टीम टैक्टिक्स को यूज करें एंड कैसे स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर. बट वी गेट टू सी ये स्पैम कमिंग फ्रॉम किलुआ एंड इट डिड पुट इनटू इफेक्ट बट इट गॉट ट्रेडेड. Now we get to see Team Tourney being very cautious about the opponents coming out here. Ice Gold coming back to B side, considering that they might be rotating, but they're already prepared for coming to A side. Being very cautious here. And we get to see Team Eternus coming into action. Dark Seiken using the wall and now planting. Meanwhile, Eternus. 30 seconds left. Oh, Eternus missed. Now, Eternus is indeed in danger, but no, Eternus gets another and it gets traded by none other than Black Star. Oh, Black Star gets traded as well. And this round goes to none other than Team Tourney. I think AK Brimstone has a huge part, especially in maps like Bind. Oh, did we just get to see T-Bag coming from Team Tourney? I think so. It's all in fun, but then again, yes, I do agree with you. Brimstone जैसा Ascent, Bind जैसे maps, जो Bind Ascent, not well Ascent specifically, but then again Bind जिस तरीके का map है यहाँ पे close quarters है and जो smokes है उनका time भी बढ़ा दिया गया है almost 20 seconds, तो yes काफी effective agent है. And then again दोनों ही teams ने इसीलिए choose किया है ये agent that is going to be Brimstone. लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेटअप देखूं तो ए साइड का सेटअप लग रहा है अल्टीमेट और फोर्स यहाँ पे एक्टिवेट कर दी गई है और ए साइड से वापस घूम के बी की तरफ आ रहे हैं. सुसाइडल मिरर इज देयर, ही हैज दिस टेलीपोर्ट रेडी, ही कैन जस्ट किल वन प्लेयर, लेकिन वो सारे के सारे प्लेयर्स जा रहे हैं लॉन की तरफ. बट द स्पाइक इज विद द सेज, इफ ही गेट्स किल्ड दे लॉस्ट द राउंड आई थिंक, बट नो ही इज प्लेइंग इट सेफ. सारे के सारे प्लेयर्स धीरे-धीरे आगे जा रहे हैं. Exactly, and I'm pretty sure they have already felt Chamber's presence in the previous round, so they are very much aware of it. Let's see कैसे ये access करे, but Killua coming strong here. Oh, Killua missing it, but now he's very well aware of it, and Killua gets traded, and another round goes to team. Oh, we get to see another tea bag. I guess it's a dapper moment. Frankly speaking, AK, there have been certain formations made by every team that like इनको यहाँ पर place करना बहुत ज़रूरी है. But we get to see in the previous maps that Team Eternus have already read the particular part, especially about Chamber, especially about suicidal midas, which he always tries to hold hookah most of the time, like now in the previous round as well. And that gives them a good amount of information what to do about it. And he goes down. Indeed, यहाँ पे अपने शॉट्स थोड़े से मिस किए, मैन एडवांटेज मिल चुकी है, बट देन अगेन इट इज गोइंग टू बी अ वीक बाय फ्रॉम द साइड ऑफ टीम इटर्नस. यहाँ पे एक वेंडर जरूर मिली है, गार्डियन है, एंड किलुआ टेकिंग डाउन टेसेकन यहाँ पे. बट अभी भी प्लेयर्स बी की तरफ कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सिर्फ एक प्लेयर है जो इस टाइम ये खेल रहे हैं. बट ऑफ कोर्स टीम इटर्नस इज नॉट अवेयर अबाउट दैट कि रोटेशन जो है वो आ चुका है. किलुआ इज ऑन द साइड, Icebox playing that angle, and यहाँ पे Killua missing his shots as well. But connects the headshot. What a beautiful kill. Indeed, it's a very beautiful headshot. I have to agree upon it. And now Killua coming with another headshot. I mean, like this guy. He's just deleting the players right there. Yeah, indeed. Oh, but now he finally goes gets taken down. Yeah. Indeed. Last player standing. Oh. Spike down B. Now this round again goes to. Let's hope that we are not getting another teabag. He was coming for it. That was very much expected.
यस बट देन अगेन टॉकिंग अबाउट द गेम इटसेल्फ, यहाँ पे 3 राउंड की लीड्स एक बार फिर मिल चुकी है टीम टीएम को। और जो एक फ्लैश वाला फैक्टर हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे थे थीरियस, वो हमको देखने को मिल रहा है एज यहाँ पे अब एंट्रीज लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बिकॉज व्हेन यू हैव द फ्लैश यू कैन पुश द स्मोक्स, नाउ दे कांट। जैसे कि हमने पहले भी देखा हुक्का में उनके प्लेयर्स स्मोक्ड आउट हो रखे थे वाइल प्लेयर्स लॉन्ग से फाइट ले रहे थे एंड द फाइट्स वर आइसोलेटेड और किलियो ने उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया। और यहाँ पे भी हम अभी देख सकते हैं ब्लैक स्टार इस बार रेडी है ए को डिफेंड करने के लिए। साउंड उनको आ चुका है, इन्फो देंगे टीम को, इसी के साथ सोवा भी रोटेट करेंगे और डिफेंडिंग टीम से इनफैक्ट किलो इज आल्सो कमिंग विद हिम, दैट इज द जेट ऑफ द डिफेंडिंग टीम। 4 प्लेयर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे साइड पे मिल सकते हैं अगर वो अभी रश करने की कोशिश करते हैं। काफी अच्छे काउंटर यूटिलिटीज यहाँ पे डाली जा रही हैं, थोड़ा सा आइसोलेट कर दिए गए हैं एंगल्स। अब यू हॉल कंट्रोल जरूर मिलेगा बट ब्लैक स्टार इज गोइंग टू डिनाई दैट। प्लांट जो है आ जाएगा। यस Yes, absolutely. Plan आ जा चुका है and now they are planning on post plan situation. Let's see Black Star कैसे emphasize करता है. Black Star is all ready to counter the measures, but they are also holding the sides very carefully. Killua coming with an op. He also know, and Killua takes one. Killua gets One enemy 15. remaining. completely sandwiched them there. Indeed. And Team Tourney gets another round in their hand. I think this is the best part about being arena main. Like you get to flash, you get to dismiss, you get to heal yourself. I mean, you're absolutely independent. Yes, indeed, and that's what the meaning of a duelist is. You know, self-sufficient fraggers, and indeed यहाँ पे वो रोल भी निभा रहे हैं अपनी टीम के लिए। किल लेते हैं आराम से, you know, वो कंट्रोल रखते हैं। चाहे अभी थोड़ा सा ट्रेड हो गए थे, but let's just take a look at the scoreboard. Killua is rocking it. 17 frags, 7 deaths, 2 assists. And he has the operator and the blade storm activated और उसी की तरफ players आ रहे हैं and यहाँ पे अपना पहला shot miss कर देंगे। No, I think I halved it a bit more than required, लेकिन यहाँ पे अभी तक जिंदा है और यहाँ पे ड्रोन किया जाएगा उनका एंगल क्लियर ऑफ करने के लिए, फॉल बैक करेंगे। इटर्नस यहाँ पे ब्लैक स्टार के ऊपर फ्रैग निकालते हुए, ब्लैक स्टार को हम कह सकते हैं हम कास्टर्स ने थोड़ी सी नजर लगा दी, यू नो द कास्टर्स कर्स, बट देन अगेन इटर्नस हैज द शावर कंट्रोल और यहाँ पे हम देख सकते हैं सारे के सारे प्लेयर्स ए साइड की तरफ आ चुके हैं टीम इटर्नस के। यहाँ पे अल्टीमेट पॉप की जाएगी, प्लान डिनाई किया जाएगा, इनफैक्ट यहाँ पे ब्रिमस्टोन को भी टेक डाउन कर देंगे बट साथ ही रिवाइव आ जाएगा और इटर्नस एक और किल, माफ कीजिएगा डीटी एक और किल निकालते हुए, बट उनको भी उसी टाइम ट्रेड किया है यहाँ पे किलुआ ने। इट्स 3v4 सिचुएशन, 3v4 रीटेक सिचुएशन को 3-3 में कन्वर्ट कर दिया गया है, बट देन अगेन अनदर वेल बेसिकली a trade coming in and can we see a jet diff? Oh my god, can I'm hoping we for यहाँ a पे jet diff, but let's think before the stage ends, the jet diff's already. One enemy Ah, remaining. oh! Last player Now it's a standing. 1v1. Let's see if there's a Sova diff here already. Well, indeed, यहाँ पे यूबी को साउंड आ चुका है, टैप दिया गया है। आइस कोल्ड इज होपिंग हिम टू कम आउट ऑफ द यू हॉल्स, ही विल एंड ही विल गेट द बेटर ऑफ द 1v1 डुअल। इसी के साथ आराम से डिफ्यूज कर देंगे और एक और राउंड अपनी टीम के लिए कंफर्म करेंगे। स्कोर लाइन इज गोइंग टू बी 8-3 विद 5 राउंड्स इन फेवर ऑफ टीम टीएम। And another teabag coming Last from Team round Tourney. in the I think they are absolutely doing it for fun. But here's the main part about Killua. What I'm observing is that वो hold किए जा रहा है and his stabs, they're so precise. Like आपको पता ही है कि he will hit the shot accurately. Indeed. And the best part about Team Tourney is Stay that safe. they're holding all the angles very precisely. Xiao पे थोड़ा बहुत disturbances आ रहे हैं, but now Killua is there to hold the side. Unfortunately, there's no one, and Team Eternus is looking to hook up for Team B, sorry, B side. But now we have Black Star prepared here, and Black Star gets one. Black Star gets two. But now comes with double peak, and Black Star goes down. And let's see how the 2v2 situation will go. And he is expecting Dark win and he will get the kill. One Dark enemy Sagan remaining. has now it's a 1v1. Dark Sagan is definitely Oh going my on it, God. and that's What? some great kills. He just peeked him Switching and got sides. the headshot with a I with a mean, Guardian, dude. Guardian is a very unexpected weapon according to me. I mean, like मुझसे नहीं होता. For me, it's an NHK moment, but
for Darksaken, man, amazing. Indeed, what a precise aim this guy has right now. एकदम सही टाइम पे चमक के अपनी टीम के लिए फॉरवर्ड आ रहे हैं एंड यहाँ पे 8 राउंड की माफ कीजिएगा 4 राउंड की लीड जरूर है बट देन अगेन इट इज सॉर्ट ऑफ ए डिफेंडेड साइडेड मैप जैसे कि आप भी स्टार्टिंग में बोल रहे थे यहाँ पे जो एंगल्स हैं थोड़ा डिफेंस को फेवर करते हैं और अब यहाँ पे वो फ्लैश वाला फैक्टर हट जाएगा यहाँ पे जो सेज है द डबल सेंटिनल ब्रिंगिंग इन द मेटा यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक ऑफ करेंगे अपने एनिमीज को एंड यहाँ डीटी की बात करें फॉरवर्ड चढ़े राइट ऑन द ब्लैक स्टार Absolutely. Now Killua is trying to take all the information. They still have Sova, so that is indeed a big help for them. But Void is prepared in prepared in lamps, and सब लोग अपना positions hold किए जा रहे हैं. And now comes Killua inside, spamming through the smokes. But Eternus preparing. Oh, and that's indeed very shocking for them. They didn't expect that to happen. Now Spike planted. Mighty came with a plant, and perhaps they will be going for post-plant situation, as we can see. Oh, he has the lineups ready. Yes, indeed, a post-plant situation. Last player standing. I think the field is lineup as I can see, but then again he gets the first kill and he's not going to be good for more. इसी के साथ जो राउंड है जा चुका है डिफेंडिंग टीम के फेवर में माफ कीजिएगा एंड जैसे कि मैं बोल रहा था थोड़ा डिफेंडेड साइडिंग फेवरिंग मैप है ऑलरेडी फर्स्ट ब्लड जो वहाँ पे निकाला एक बहुत ही खूबसूरत वन टैप के साथ स्टार्टिंग से ही वो मैन एडवांटेज था एंड यहाँ पे भी एक 1v2 सिचुएशन था तो यस प्रीटी मच मैन एडवांटेज वही जो कैरी फॉरवर्ड होके आया और इसी के साथ अब एक इको राउंड हमको देखने को मिलेगा टीम टीएम की तरफ से और यहाँ पे जो राउंड्स की लीड है वो थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी थेरियस हाँ जी एब्सोल्युटली बिकॉज अगर देखा जाए तो सेंटिनल्स के हिसाब से मेरे हिसाब से सेज is a huge advantage for a team. They can hold the enemies for a very long time, and same goes with Chamber. But again, Chamber has been utilized more as a duelist. So let's see Chamber को वो लोग duelist के हिसाब से utilize करते हैं और as Sentinel. But now we get to see a very fast entry to the side, and one goes down, two goes down by Eternus. Eternus being very careful here. Even Killua goes down. Now it's 2v3 situation. Defensive side के लिए बहुत advantage है because they already have the guns. Deploying drone. Now clearing the site, they might be going for a... They are already... Oh, and that's a... Yeah. But now comes the effects of Judge. One enemy remaining. Oh, that's another stab. Okay, well that's a wrap. Indeed. Like we have already discussed before, it's a defensive map, and whoever is in defense, they get the advantage. And it's not that he attacking को कुछ भी advantage नहीं मिलता, but it entirely depends upon how they utilize the agents correctly. Indeed, but I think यहाँ पे economy पे थोड़ा सा team Eternus struggle कर रही है. Void is going for the full buy. He's not ready to play the bonus round. He said he is. He's saying that he is going all in. Well, Brimstone was AFK. He couldn't buy anything. So let's see यहाँ पे. I think जैसा यहाँ पे आर्मरी का एडवांटेज है थोड़ा सा टीम टीएम की तरफ से मुझे हैवी वेपनरी नजर आ रही है तो शायद ये राउंड उनके फेवर में जा सकता है बट देन अगेन 3 प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं इनफैक्ट जेट इज आल्सो रोटेटिंग इट डीटी यहाँ पे एकदम इंच से बचे हैं बट साउंड उनका आ चुका था Suicidal Midas lurking into the side. Killua getting another frag और यहाँ पे Void को भी take down कर दिया गया है 2v4 situation. यहाँ पे trap को किसी तरीके से okay well my bad the chamber is dead so yes the backstab is indeed coming in. UB was right there but Ice Cold will take him down. Desagan का info मिल चुका है. He just has a spectre to work with. यहाँ पे 2 frags निकाल चुके हैं. He is going for the third. He has his heal available. Well, अभी ज़रूरत नहीं है उसका अपड्राफ्ट करके फॉरवर्ड जा रहे हैं Killua but they are not challenging him. यहाँ पे डबल पिक ले सकते हैं but they are giving him full respect especially after that round. यहाँ पे थर्ड किल निकाल चुके हैं but he is not expecting Killua. Oh, that was so close and so well played by Daz again.
बार बार अपने एम के साथ अपनी टीम के लिए यहाँ पे कामयाब साबित हो रहे हैं एंड फिर भी राउंड हार चुके हैं, बट फिर भी जो एक मोमेंटम आया होगा कि देखिए हमारी टीम का प्लेयर कितना अच्छा परफॉर्म करके गया है, सिर्फ एक स्पेक्टर के साथ ऑलमोस्ट एक 1v4 निकाल लिया था। तो yes, that is going to bring some momentum, some confidence into their team. 9-6 का स्कोर लाइन, 3 राउंड्स की लीड, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन है, अभी भी थोड़े और राउंड्स शायद लूज करेंगे, बट देन अगेन दे शुड हैव द You want to कॉन्फिडेंस play? टू Let's मेक द play. कमबैक। Absolutely. Now we get to see 1v1 situation in the shower. Let's see कौन जीता Black Star and Black Star gets set. अभी इकोनॉमी की बात किया जाए तो it has affected a lot for Team Eternus and they are trying to ensure that it gets saved accordingly. But now we get to see some Bucky action here. Will we get to see? No. Trying to defend Oh, the itself. timing. Yes, absolutely. The timing is very precise. Well, Blacks are getting another frag, but Void will shut him up right then and there. इसी के साथ अपना पहला frag Blade Storm के साथ निकालते हुए इस round के लिए Daz again bringing the revive, the resurrection in an eco round. Well, that is interesting. इसी के साथ A side पे ही rotation आ रहा है, यहाँ पे टीम TM का हवा में उड़ेंगे, but Ice Cold उनको उसी तरीके से नीचे उतारेंगे। साथ में UV भी Ice Cold के ऊपर एक trade लेते हुए इसके साथ teleport लेके यहाँ पे rotation ले लिया गया है। सारे के सारे players जो हैं A side पे इस टाइम पे जो मौजूद हैं वो वापस जाएंगे, थोड़े बहुत वेपन जरूर उठाने को मिलेंगे, बट इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट रीटेक फॉर द डिफेंडिंग टीम। एज वी कैन सी अभी तक जो है सिर्फ 2 राइफल्स, एक शॉटगन है उनके हाथ में, ज्यादा यूटिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। ड्रोन करके फॉरवर्ड एंगल जरूर क्लियर कर लिया गया है, दे नो दैट द सिटी इज क्लियर फॉर देम, बट यहाँ पे काफी अच्छा एंगल किलुआ का, हालांकि किल नहीं निकाल पाएंगे जो दैट working with the tower that force यहाँ पे एक फ्रैग निकाल चुके हैं, struggling to get the second one, but will get traded instead. Killua taking down UB right then and there, counter trade coming in। इसी के साथ 10 सेकंड बचे हैं 1v2 सिचुएशन में, टाइम नहीं है उनके पास, यहाँ पे एम तो है बट एक किल निकालेंगे। Well, he is going for the defuse, so just milliseconds remaining and Brimstone यहाँ पे फायदा उठा के उनको टेक डाउन करेंगे, खुद भी डाउन हो जाएंगे, but that is a round secured and a lead taken for one more round। 4 राउंड्स की लीड यहाँ पे आ चुकी है और अब दिस इज द टाइम इथेरियस यहाँ पे स्टेप अप करना पड़ेगा टीम इटर्नस को, क्योंकि अब उनका बाय राउंड भी है, वॉइड के पास ऑपरेटर भी ऑनलाइन है। सो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ से कमबैक होगा और इज इट गोइंग टू बी अ क्लीन स्वाइप? I think जैसे मोमेंटम अभी चला जा रहा है, आई थिंक इटर्नस माइट हैव अ ह्यूज एडवांटेज टू इट। राइट नाउ दे आल्सो हैव एन ऑपरेटर इन एक्शन एंड वॉइड इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड for Killua. Let's see if it Killua. No, he also misses the round. Oh my god, he also misses the shot. But now we get to see Sova action coming into action, and Sova has given particular damage to him, but we get to see Void going down here. Meanwhile, we also get to see their Sage being holding the B side clearly, but now they know that it's entirely onto A side. So now we get to see a rotation coming into a 3v2 situation, a very huge advantage for the attacking side with Killua staying on the side itself. But will Killua get the trade? Oh, now it's a 2v2 situation. Killua being very careful here, but Killua goes down. Scanning ahead. Open up the sky. Oh, UB is coming for that ace, but यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया है indeed. Oh, he will get the kill and that is the round secured. And like you said before, एक बार momentum बन जाए तो it's very hard to break it already. We can already see that, and Eternus is trying their best to create a momentum, and I think now they have made it. So let's see how they will put it into effect for the defensive side. And now we also get to see Void coming up with a Guardian like the last time I saw a Guardian with Darksaken, he was absolutely killing it. So let's see कैसे ये सब होता है. Now we get to see Team TM bringing action into B side. Darksaken being very careful here, creating a wall, but he's already prepared for both
for both Chamber and Brimstone. Brimstone being very careful, taking out the info, and he saw it, but well, it. Oh, one he will goes get down. Blackstar holding key long already. Oh, now Killua goes down. One enemy remaining. Spike down B. Now it's Blackstar versus the rest of the team. Let's see how Blackstar will put it into emphasis. Blackstar being very careful here. He knows that one wrong stab could punish him, so he's just waiting for it. But little does he know that everyone is waiting for him instead here. You'll be coming here. He gets the info, but it's a flawless round by Team Eternus. वेल इंडीड जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे इकोनॉमी लूज किया है लेकिन कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया है और इकोनॉमी आते ही वो कॉन्फिडेंस भी हमको देखने को मिल रहा है वेल मैं अभी यहाँ पे लीड की बात करके जिंक्स नहीं करूंगा बिकॉज आई डू रियली वांट कि थोड़ा ओवर टाइम वगैरह देखने को मिले आफ्टर ऑल इट्स सेमीफाइनल्स और यहाँ पे वेल फिलहाल मैं सेटअप्स की बात करूँ तो 4 प्लेयर हमको ए की तरफ नजर आएंगे टीम इटर्नर्स की तरफ से काफी बढ़िया रीड यहाँ पे आता हुआ एंड हम देख सकते हैं कि अटैकिंग टीम दैट इज गोइंग टू बी टीम TM दे आर आल्सो making their way towards the A side. Well, TT has a tour de force, the ultimate online of the chamber और 3 प्लेयर्स यहाँ पे अटैकिंग टीम की तरफ से शावर से आ रहे हैं ड्रोन करके इन्फो निकाल ली जाएगी एटलीस्ट 2 प्लेयर्स की एक प्लेयर को रिवील भी कर दिया गया है दैट इज गोइंग टू बी द चेंबर सुसाइडल मिदास और इसी के साथ Killua गेटिंग द फर्स्ट फ्लैग राइट ऑन टू माइटी इटर्नस यहाँ पे पहला फ्लैश आता हुआ एंट्री के लिए लेकिन यूवी अभी तक अपनी पोजीशन में और यहाँ पे थोड़ा सा स्पैम जरूर खाएंगे दूसरी तरफ ए शॉट से एंट्री होती हुई नजर आएगी Killua इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ द सोवा बट DT will take him down और उसी के साथ ट्रेड भी हो जाएंगे यूबी jumping down getting one frag उसी के साथ वो भी ट्रेड हुए back and forth trades coming in from both the teams and all in all, it's a 1v2 situation now for Dezican. He has the aim, he has the confidence, and he has the resurrection as well. He can bring it to make it a 2v2. Spike जो है वो plant हो चुका है. Brimstone is already on low HP. Blackstar will pick him and will take him down. इसी के साथ बहुत ही प्यारा headshot connect करेंगे और जिस confidence की मैं बात कर रहा था, I think I jinxed it, but उसी को यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ा जा रहा है और एक और राउंड सिक्योर किया है जो 2 राउंड का थोड़ा सा मोमेंटम मिला था उसको कंप्लीटली ब्रेक ऑफ कर दिया है यहाँ पे इथेरियस और 3 राउंड्स की लीड ले जा चुके हैं फिर से Absolutely, and TM जैसे emphasis कर रहे, they are reading their opponents very well. वो देख रहे कि हर कोई opponent कहाँ पर hold कर रहे हर पर. Like for example, they know कि it's Sage who is almost holding every round in hookah or coming to shower. So according to that, they're putting their agents there. Now we get to see Mighty staying there on hookah, knowing along with the judge, and we know that a judge and what it can do. But Black Star goes down, and now Killua has been affected. Oh, Killua somehow gets saved by it. I have to say it was lucky, absolutely lucky. But now the timing is very much precise because Mighty is already prepared with a judge. We also get to see suicidal middles coming towards B side, waiting for any information. And he gets the information and gets taken down by Eternus, Void Eternus already. What I have to say is that both the teams are being very careful with wherever they are holding. And now we get to see a particular spam, but now they have instantly rotated and both the teams are rotating towards it. Indeed, but Dazakan is 30 there. He seconds can left. get a frag or two. Ice Cold will use the outdone to clear off the angles and he missed the players on to all. He's being distracted by the players. And यहाँ पे अपने shots miss करेंगे Dazakan. Well, we were expecting way too much out of him and he just kind of disappointed us. But Void is there to cover it up. Ice Cold को take down कर दिया जाएगा. सारे ही players को in fact जो कि इस तरफ आए उनको take down किया जाएगा. Mighty is trying to fight off clear and यहाँ पे क्या headshot connect पाएंगे? Well, no. The other team will get the better of it. Void भी यहाँ पे low HP पे हैं. Okay. Well, that was close, but then again defending. Yeah, got indeed. the round And we again. get to see a particular lineup, particular vote from both the teams making fun of it. I guess they were all trolling here. Don't mind me coming from Void Eternus itself.
I guess they're not. They're trying to make sure that it's a 1v1 of the century. Nice. Indeed, well, that is what we are here for. We are celebrating the anniversaries of both the servers. We are just trying to have our fun along with some Valorant action. So yes, thoda fun, thoda masti, thoda gameplay, thoda try hard. So that is a perfect combination for the semi-final right here. And well, coming back to the match right now, coming to the map, हम देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे Also थोड़ा weak पाए teabag. हैं. Yeah, also Thora IRJ teabag, coming right, in absolutely. with absolute precision of his words and statements and the situation, in fact. But then again, as I was saying, यहाँ पे A side की तरफ players gathered and थोड़ा सा weak पाए हैं. We can see pistols in their hands right now. That is going to be a team TM. पूरे तरीके से होल्ड किया जा रहा है यहाँ पे. Ethereus एकदम पेशेंटली खेल रहे हैं वहाँ पे A side की तरफ. एंड दोनों ही टीम्स इनफैक्ट कुछ भी एक्स्ट्रा पिक्स नहीं दे रहे हैं बिकॉज ब्लैक स्टार कुछ इस तरीके से हमने खेलते हुए देखा है. कोई भी यहाँ पे कमी दिखती है सामने की तरफ से तो वहां पे वो फायदा उठाते हैं. और यहाँ पे हम देख सकते हैं फिलहाल डेज़र्ट स्मोक थ्रू किल निकालेंगे. Oh my God! What a trade! Yes. I have to agree. Darksaken is holding his angle very precisely, and Caught in the pain. yeah, indeed, caught it in 4K. I have to say. So we also get to see Suicidal Midas waiting for a flank. I think it is going to be planted in B side because they know that it is going to be very hard for them in the side A, and probably One they will enemy go- remaining. Oh, now it's going to be. But now Sova has. Oh, there's another shot, but now it gets taken down by Eternus itself. Eternus gets another round, and this is indeed going a very fun match. And like you said before, AK, I'm being optimistic here. I think both teams should go for some extra rounds here. Well, indeed. Truly, because both of them are, kind of setting up a really great gameplay. जिस तरीके से दोनों teams यहाँ पे coordinate कर रहे हैं. May it be on the attacking side, may it be on the defending side, the executes, the retakes. But वो जो एक coordination है वो काफी हमको अच्छे से देखने को मिल रहा है. Flashes and जो रेना के flashes हैं उसके साथ साथ recon आगे जा रहे हैं. And then counter utilities भी काफी बढ़िया तरीके से आ रहे हैं. Trades जो हैं perfectly आ रहे हैं. It's just hard to believe it's just a fun event. Seems like it's a really big tournament. Tier 2 to 3 teams playing. Some of you might think that I'm exaggerating it a bit, but then again, just look at these players. जिस तरीके से वो coordinate कर रहे हैं. यहाँ पे एकदम angle out करके खड़े हैं. अपना one tap miss करेंगे Suicidal Midas के ऊपर. दोनों की तरफ से एक one tap miss यहाँ पे हुआ है. बट अभी मैं फिर से एक बार मैप की तरफ अगर नजर डालूं और अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा इन्फो दूं यहाँ पे तो हम देख सकते हैं दो प्लेयर्स अभी फिर से आ रहे हैं हुक्का के एंगल को चैलेंज करने. बट माइटी इज स्टिल देयर. वो पीछे बिल्कुल नहीं गए हैं. धीरे धीरे आप एंगल क्लियर किए जा रहे हैं. वेल इस बार जरूर अपना हेडशॉट कनेक्ट करेंगे और एक किल लेके आराम से फॉल बैक करेंगे. कोई भी ट्रेड पोटेंशियल वहां पे नहीं छोड़ रहे हैं. एक मोलोटॉव भी डाल दिया गया है. ब्लैक सर अपना इन्फॉर्म यहाँ पे रिवील करेंगे. और दूसरी तरफ मैं अगर शावर्स की बात करूं तो किलवा वहां पे मौजूद है. एंड ब्लैक सर गेटिंग अ कॉल एट. What just happened? He got a body shot collateral? Ethereus, so. what? I think so. He got a body shot collateral, and here we get to see Killua. Killua is already dead, but yeah, indeed. I think we were so much into Blackster's collateral damage that we didn't even get to know that Killua was killed. Now we again get to see 2v2 situation. Let's not forget that Sova has a post-plant situation here coming. But I believe it will go down here. Now coming with a Sheriff against two Vandals. It is indeed tough. Oh, did he know? But he got... Now we get to see a huge comeback from Team Eternus. What do you say about yes, it, AK? Indeed. Yeah, yes, indeed. that's what we were hoping for. यहाँ पे I think they have won 7 rounds in this half and 3 राउंड जीते गए यहाँ पे अटैकिंग टीम के द्वारा. तो यस 11-11 स्कोर लाइन वंस अगेन. यहाँ पे दोनों ही टीम्स का स्कोर जो है वो टाई हो चुका है. एंड बोथ ऑफ देम आर नाउ ओनली 2 राउंड्स अवे फ्रॉम द विक्ट्री. एंड बोथ ऑफ द टीम्स हैव देयर बाइज अप, हैव देयर बाइज रेडी. एंड यूबी हैज टेकन आउट दी ओडिन. ही हैज द रिकॉन एंड प्लेयर्स जो हैं वो अभी उनकी तरफ फिलहाल नहीं जा रहे हैं. बट इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस राइट हियर. बी साइड पे कंप्लीटली डब्ल्यू दबाया जा रहा है.
We get to see both the duelists coming here, but this Brimstone is waiting for them. Brimstone takes one. Being very careful here, but he goes down here. Blackshot taking the trade. Suicidal Midas coming towards the elbow. Oh, now comes. Oh, here comes the Odin effect. Last player standing. Spike planted. But now he's trying to run away. He's being very careful here. Brimstone coming with the smokes and he's healing himself. Dark Sake, let's see how he will take it. Dark Sake takes another one. Oh, this is going to be cheeky. यहाँ पे full information का utility available है. Absolutely, Gold and is he going has for the the ultimate. Oh, he cancelled it. He's playing it to perfection. Oh, it goes down. Radiant's essence. I have to That say, is such a crucial clutch, Ethereus. absolutely. Coming from the tea bags to here, that's a huge step. Match point. Only one round away from finishing this map in their favor. That is going to be the first map of this best of 3 series of the first semi-finals, guys. The next map जो है, the next map that is up, उसका information थोड़ी ही देर में हम ज़रूर share करेंगे. Already I called the veto at the starting of the stream, but then again यहाँ पे वापस अगर मैं map की बात करूँ तो buys अभी भी available हैं. यहाँ पे DT के पास वैंडल उनको दे दी गई है. तो ये लेट्स सी किस तरफ जाते हैं. एक अच्छा रीड आता हुआ. ऑलमोस्ट सारी टीम यहाँ पे डिफेंड करने को अवेलेबल है ए साइड पे, बट आई थिंक यहाँ पे फेक सेटअप हमको देखने को मिल सकते हैं. एक प्लेयर जरूर रिवील होंगे वहाँ रिकॉर्ड से. एंड किलुआ takes one. माइटी को टेक डाउन करेंगे. वेल इंडीड यहाँ पे काफी अच्छा रीड. Kilua is very low right now and he gets resurrected, but he goes down again. अभी सब लोग बहुत केयरफुली भी देख रहे हैं, बट वी गेट टू सी अ रोटेशन टुवर्ड्स बी एंड वी आल्सो गेट टू सी यू बी होल्डिंग द बी साइड वेरी केयरफुली, ट्राइंग टू गेट आउट और गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन पॉसिबल, बट दे आल्सो बीइंग प्रिसाइज हियर. Darksaken taking out information, knowing that Suicidal is waiting to hunt him down, but oh, he missed the shot. He's just playing with this food. Absolutely. I think it is going to be A side again, but we have to know that there are 2 agents waiting here. On the other hand, there are 2 other agents. We also get to see that they are being very 30 precise here. seconds left. Darksaken takes 2 but gets traded right away. Now it's a 2v2 situation. Will it be a Team Eternus or will it? We get to see a rotation here coming from Team TM. 10 seconds left. Last What? player standing. Okay, you Planted. still get Again. And Team Eternus wins the first map. QB just went through right And we get through to that see Molotov. some easy. Defenders win. The day is not Let's see how the second map goes between both the teams, because now they are furious. I'm pretty sure about that. So what do you think about it, AK? What do you think about the entire match? The comeback coming from Team Eternus itself. But we also get to see that Kilua is at the top of the leaderboard with 31 kills and an average combat score of 354. Well, those are some stats, but on the other hand, Dazakan, 29 frags and that to play with the Guardian, the 4K coming in, the clutch coming in, that was absolutely amazing. Well, indeed, दोनों ही टीम जैसा कि स्कोरबोर्ड से भी हम देख सकते हैं काफी ज्यादा बढ़िया खेले यहाँ पे, but then again the better team got to win with score line of 13-11. That was indeed close and जैसा कि हमने बोला था close जाए मैच, थोड़े एक्स्ट्रा राउंड्स चलो नहीं देखने को मिले, बट देन अगेन वो एक सेमीफाइनल वाला जो मसाला होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे हमको टेस्ट करने को मिला. इतना क्लोज मैच हमको देखने को मिला है. एंड जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे थे एक थोड़ा सा रिस्की सा पिक था कि रेना की जगह उन्होंने सेज उठाया है, बट एज अगेन प्रूविंग हिमसेल्फ कि ही कैन प्ले एज गुड एज रेना इवन व्हेन ही इज ऑन द सेज. सो यहाँ पे इसी के साथ फर्स्ट मैप जो है वो रैप होता है एंड the next map on the series is going to be Breeze.
एब्सोल्युटली एंड ब्रीज में देखा जाए तो जेट नियॉन और इन सब का बहुत बड़ा हाथ होता है सो लेट्स सी हाउ इट गोज सोवा being a very crucial player there because he gets to gather all the intel. I'm honestly saying I'm looking for a Fade agent there because Fade has been very much meta agent lately for the VCT people. So let's see कैसा होता है. Even not, let's not forget that the recent buff जो Phoenix को मिला है, gathering all the flashes and all, that is a huge advantage. But I don't think Phoenix would be much of an use in a huge map like this. But yes, indeed, Sky is another agent that can be picked here. So, what do you think about it, AK? What do you think would be the prediction of both the teams? What are they going to pick? वेल आई डू एग्री फेट जैसा एजेंट जो है वो ज़रूर पिक्स में आ सकता है बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टीम्स कि उन्होंने किस एजेंट्स के साथ कितना प्रैक्टिस किया है अभी भी एज वी कुड सी देवर बेसिकली गोइंग विद द डिफॉल्ट्स डबल सेंटिनल डबल duelists, no double controllers, no double initiators, so they are just going with defaults, default picks I would rather say. तो यहाँ पे ब्रीज पे भी हमको चेम्बर जेट सोवा एंड देन फ्लैशेस के लिए रेना इज गोइंग टू बी इनफ और उसके साथ वाइपर इज एन ऑब्वियस पिक सो डोंट नीड टू मेंशन दैट आई थिंक ऐसे ही पिक्स देखने को मिलेंगे बट इट will be interesting to see if we get a Sky or a Fade, Sky with Sova or Fade or KO in fact with another initiator because obviously you need one initiator for the flashes and you need another initiator for the info but KO brings both of those utilities into the game by himself. He has the knife, the 0 point जिससे वो information निकाल सकते हैं and then he has the pop flashes himself, well, not specifically pop flashes but yes when you're using the right click of that KO flash it kind of really becomes the pop flash. So yes I think ऐसे picks हमको देखने को मिल सकते हैं this. Yes, absolutely. Because KO ऐसा agent है जो भी बहुत meta defining हो चुका है. Like from the very beginning, he was considered to be B tier agent, but with time he got into A tier. Now he's an S tier agent, and he has been there in almost every map. Consider it Ascent, consider it Bind, wheresoever. हर जगह पे आपको KO दिखेगा ही. And उसके flash जो है pop-up flash जो आपने अभी भी बताया, that is a huge advantage for him. Not to forget his knife also, which could carry information and also stop your utilities, which is very much essential in a game like Valorant. So let's see कैसा ये लोग emphasize करते KO को लेके या फिर जिस तरह का भी initiator हो. But most importantly, I'm looking for another chamber please and again 1v1 Sova diff. So Jet versus Jet because we got to see that a lot as well as Teabag. So let's see how it goes. Well, indeed, and well, enough about the meta. I think Ethereus. I think यहाँ पे जो हमारा next map है, please वो थोड़ी ही देर में load हो जाएगा as soon as the players are ready. And I'll also take a small break. I think we all do deserve a break after that close game. So yes, even for the viewers, if you are watching, if you're enjoying the game, अपना जो refreshments होती हैं चाय पानी कोल्ड ड्रिंक वट एवर यू लाइक थोड़ा बारिश वाला मौसम है तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक कोई भी प्रेफर करेगा वेल आई एम फ्रॉम पंजाब यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ही बारिश हो रही हैं तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक कोई भी प्रेफर करेगा एज आई सेड बट देन अगेन पॉपकॉर्न चिप्स कुरकुरे जो भी आपको खाने हैं या जो भी आपके पास स्नैक्स हैं जाके ले आइए सो यू कैन गेट द कंप्लीट एंजॉयमेंट ऑफ दिस वैलोरेंट एक्शन बिकॉज वी डोंट नीड टू टेल यू कि आगे क्या ही आने वाला है हमने ऑलरेडी देखा कितना ही क्लोज ये गेम ऑलरेडी था. Yes, absolutely. And if you're somewhere from north, like AK and I are for the time being, I'm pretty sure chai and pakore, that would be something delightful to watch the stream here. And let's not forget that this is entirely made for the first anniversary of the servers and the second anniversary for the Assam Senpai Society. So please make sure to subscribe to this channel and also if possible, if you're on Discord, please join the servers. Indeed guys and इसी के साथ we will take a short break and we will be live on the stream but we will be back in 5 minutes.
All right guys, so welcome back to the semi-finals and इसी के साथ फर्स्ट मैप जो है हमारा बाइंड पे काफ़ी क्लोज गेम एज आई वाज सेइंग 13-11 के साथ ख़त्म हो चुका है एंड द नेक्स्ट मैप अप इज गोइंग टू बी ब्रीज मैप। यहाँ पे हम देख सकते हैं अटैकिंग साइड से इस बार शुरू कर रहे हैं टीएम एंड इटर्नस इज गोइंग टू डिफेंड राइट नाउ। एक प्लेयर जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं। आई थिंक हमको थोड़ी देर में जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वेल ऑफ कोर्स देयर आर 6 मैन रोस्टर्स एंड इट्स प्रीटी मच अ फन इवेंट, सो यस यहाँ पे थोड़े बहुत प्लेयर स्विच हमको होते हुए दिख सकते हैं। बट देन अगेन यहाँ पे अगर मैं पिक्स की बात करूँ, आइस को टेकिंग दैट सोवा वंस अगेन। उसके साथ डेविक जो आए हैं वो भी जेट लेना चाहते हैं, किलुआ भी जेट लेना चाहते हैं। लेट्स सी यहाँ पे किलुआ जो है वो रेना पे जाएंगे। ब्लैक स्टार टेकिंग दैट चेंबर एंड सुसाइडल मिदास इस बार चेंबर का रोल छोड़ के कंट्रोलर का रोल पकड़ रहे हैं एज वाइपर। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टीम इटर्नल्स की तो वंस अगेन यहाँ पे चेंबर है, वाइपर है, जेट है, सोवा है एंड स्काई है। एज वी वर स्पीकिंग की डबल इनिशिएटर यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है एंड इनफैक्ट सोवा के साथ एक स्काई ज़रूर वो जो एक इन्फॉर्मेशन एंड स्काई के फ्लैशेस से भी प्लेयर्स का पता लगता है एंड द ब्लाइंड एस्पेक्ट एज वेल। मीनवाइल यहाँ पे टीएम के पास डबल डुअलिस्ट है, दैट इज गोइंग टू बी रेना एंड जेड। तो वहाँ पे थोड़ी सी डब्ल्यू गेमिंग जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा डब्ल्यू वहाँ से हमको नजर आ सकता है। एंड इसी के साथ थोड़ी ही देर में हमारा जो सेकंड मैप है चालू हो जाएगा। फर्स्ट मैप ऑलरेडी टीम इटर्नल्स जीत चुकी है। सो गाइस डू ड्रॉप योर प्रेडिक्शंस इन द चैट। आई थिंक इफ देयर इज अ पोल अप तो उस पोल पे ज़रूर वोट करें अपनी जो भी आपको टीम लगता है जीतेगी या जिस भी टीम को आप खुद सपोर्ट करते हैं। आपके जो भी दोस्त लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंड पहले भी मैंने बोला था गेट योर रिफ्रेशमेंट्स, आई होप यू हैव देम। और इसी के साथ वी आर ऑन द स्क्रीन एंड वी विल बी लाइव इन अ फ्यू सेकेंड्स। एंड देयर वी गो, द मैप हैज़ लोडेड और इसी के साथ सारे के सारे प्लेयर्स धीरे धीरे जा रहे हैं अपनी पोजीशंस पे। हम देख सकते हैं ए साइड की तरफ थोड़े से हमको अटैकर्स गैदर हुए नजर आ रहे हैं। वेल इट्स टू अर्ली टू से दैट। आराम से 20-25 सेकेंड है यहाँ पे सोचने को, बट जिस तरीके से हम उनको देख सकते हैं कि पूरे तरीके से एक इस तरफ गैदर हो रखे हैं। यहाँ पे डीटी की मैं बात करूँ तो एक वाइपर सेटअप लगा रहे हैं। वेल ऑफ कोर्स नॉट मैनी ऑफ यू नो मी, बट सिंस सम ऑफ यू डू, यू ऑलरेडी नो कि मैं भी वाइपर ही खेलता हूँ इस मैप पे। तो आई विल बी पर्सनली वॉचिंग बोथ ऑफ द कंट्रोलर्स। उनका थोड़ा गेम प्ले मैं शायद एनालाइज करने की कोशिश करूँगा। एंड देन अगेन जो यहाँ पे वॉल सेटअप की गई है काफ़ी अच्छे तरीके से है मिड की, लेकिन राउंड जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे अर्ली ट्रेल ब्लेजर डाल के इन्फो निकाला जाएगा। आइस कोल्ड को स्पॉट कर लिया गया है। डेविक भी यहाँ पे रिवील हो चुके हैं। दोनों के दोनों इनिशिएटर यहाँ पे ऑलरेडी ए साइड की तरफ डिफेंड कर रहे हैं। डेविक गोइंग इन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ खेला जा रहा है। वेल यू भी यहाँ पे पीछे आएंगे, रिवील हो चुके हैं। क्या उनके ऊपर स्पैम पड़ेगा? जी नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डैमेज जरूर खाएंगे। बट डेविक गेटिंग दैट फर्स्ट ब्रेक किल हुआ, कमिंग विद अनदर वन माइट, गेटिंग अ ट्रेड, बट ही इज he teleports right then and there. He is left on a very low HP kill हुआ। यहाँ पे येलो की तरफ फॉरवर्ड आके खेल रहे हैं। मैप कंट्रोल काफी ज्यादा है, यहाँ पे शॉट्स मिस करेंगे बट डेविक इटर्नल्स को टेक डाउन करेंगे। वॉइड ने ब्लैक स्टार के ऊपर ट्रेड ले लिया है। इटर्नल्स यहाँ डीटी पीछे से आते हुए वॉइड एक और किल निकाल लेंगे। इसी के साथ 1v2 सिचुएशन बन चुका है, लेकिन डेविक प्लेइंग इट स्मार्ट, द ट्रिगर डिसिप्लिन। उनको पता है एक प्लेयर केव से आ रहे हैं, उनको स्पॉट कर लिया एंड ही विल क्लच दिस आउट। ओह माय गॉड, स्टार्टिंग से ही हमको वो वैलोरेंट एक्शन देखने को मिल रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस सेमीफाइनल में। डेविड कमिंग इन विद अ ब्यूटीफुल 4K वहां पे एंट्री निकालते हुए एक के लिए एंड देन पूरे तरीके से घूम के जेट होते हुए माइंड गेम्स खेल गए यहाँ पे और एक 1v2 क्लच के साथ अपना राउंड जो है उन्होंने सिक्योर किया है। इसी के साथ मोमेंटम अपनी टीम का स्टार्टिंग से ही हाई रखते हुए और अब एक राउंड हमको वेल एज एक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा। बट माइटी was trying to get a marshal but he won't। यहाँ पे अभी तक आइस कोल्ड के पास एक शेरिफ है, तो ये थोड़ा सा बोनस ऑलरेडी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हॉल्स की तरफ देखें तो 2 इनफैक्ट 3 प्लेयर आ चुके हैं। सुसाइडल मिदास को थोड़ा सा सरप्राइज दिया जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स उनके ऊपर स्पैम करेंगे अपनी क्लासिक के साथ और डीटी को एक किल मिल जाएगा। डेविक कमिंग बैक, यहाँ पे सारे प्लेयर्स को उन्होंने भी स्पॉट कर लिया है। एक किल जरूर निकाल पाएंगे, दूसरा किल भी निकालने की कोशिश करेंगे, जरूर निकालेंगे। इसी के साथ वॉइड जो उनको फाइनली टेक डाउन करेंगे। माइटी के पास एक गन अवेलेबल है, वॉइड एक वैंडल रिकवर कर लेंगे, बट दोनों ही प्लेयर्स ऑलमोस्ट हाफ एचपी पे बचे हैं। वॉइड विल गेट अ ब्यूटीफुल फ्रैग राइट ऑन टू ब्लैक स्टार।
Mighty is going forward. He just have a Spectre. Ice Cold will take him down with his Sheriff. But Void connecting a beautiful headshot and Ice Cold will take him down. Well, okay, that was actually pretty close for Team TM here. यहाँ पे almost lose कर सकते थे round. काफी अच्छा पुश हमको देखने को मिला हॉल्स की तरफ से एंड एक इको राउंड के लिए काफी सक्सेसफुल राउंड कह सकते हैं इस राउंड को बट देन अगेन लेट्स सी व्हाट डू दे हैव इन देयर पॉकेट्स नाउ एज दे हैव 4 राइफल्स एंड 1 गार्डियन अप ऑलरेडी इटर्नल्स यहाँ पे काफी कमाल दिखा चुके हैं अपनी गार्डियन के साथ वेल डेसेकन इज नॉट देयर राइट नाउ शैलोन इज रिप्लेसिंग हिम ऑफ कोर्स वी विल मिस हिज प्लेस ही वाज द टॉप फ्रैगर फॉर देयर टीम एंड ही हैज द गार्डियन नाउ और हम देख सकते हैं फिर से एक बार ए ही हिट किया जा रहा है ट्रेल ब्लेजर से इन्फो आ चुकी है डेविक गोइंग फॉरवर्ड विल मिस 2 ऑफ हिज ब्लेड स्टॉर्म डैश करके फॉरवर्ड आए हैं बट शैलोन विल टेक हिम डाउन और इसी के साथ जो फर्स्ट फ्रैग है आ चुका है थोड़ा सा इन्फो यहाँ पे दोनों इनिशिएटर्स का रिवील हो जाएगा डिफेंडिंग साइड की तरफ से आई थिंक दे हैव द इन्फो दैट at least 3 players are playing on the ace side यहाँ पे रोटेशन कॉल करना बेटर ऑप्शन होगा बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लेयर को लूज कर चुके हैं बट देन अगेन दे आर प्लेइंग देयर बोनस राउंड्स ऑलमोस्ट 3 प्लेयर्स के पास पिस्टल है एक प्लेयर के पास और एक वेंडल है दैट इज गोइंग टू बी किलवा एंड ही विल बी टेकन डाउन बाय टीटी राइट देन एंड देयर एंड बस अब देखना ये है यहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज कर पाते हैं डिफेंडिंग टीम की इकोनॉमी को या फिर नहीं बिकॉज वेल बोनस राउंड है बट देन अगेन जितने वेपन्स गिरा सकते हैं उतना ही ज़्यादा बेटर होगा बट यहाँ पे इटर्नल्स धीरे धीरे एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन कर रहे हैं ब्लैक स्टार यहाँ पे स्विंग करेंगे बट नॉट वेल कोऑर्डिनेटेड स्विंग वेल स्टाइडल डिड लर्क टू दैट पोजीशन बट उनको भी टेक डाउन कर दिया जाएगा नॉट फ्लॉलेस राउंड क्लोज टू फ्लॉलेस एक प्लेयर के नुकसान पे यहाँ पे जो पहला राउंड है उन्होंने सिक्योर कर लिया है और इसी के साथ अब बाय राउंड आ चुका है दोनों ही टीम्स की तरफ से आइस कोल्ड जो तब से बोनस पे खेल रहे थे उनके पास काफ़ी इकोनॉमी डेवलप ज़रूर हो चुका है आई थिंक अपने जेट को ऑपरेटर भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर अपना वेपन सेल करें तो बट देन अगेन इट्स देयर स्ट्रेटजीज एंड टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटजीज डू ड्रॉप योर प्रेडिक्शन गाइज और Yes, अब absolutely. देखना ये है एंड वी हैव Ethereus back well welcome back Ethereus and the game is actually hi. going pretty smooth and I was kind of pushing you I'm a bit late. Yeah, thank you so much. But I believe I was a bit late. So also family responsibilities be रहता है. So yeah. But anyway, talking about it, I'm pretty sure that seeing from the last round, I have seen that both Devik and Void has been very aggressive towards the round. Like they have been entering the side very much, and Killua is Spike focusing planted. a lot upon how he can flunk the side. But at the same time, Eternus has been very much careful about their strategy. But now Void goes down here. So what do you think about it, AK? How do you think this round will also go? Well, this is kind of going into the favor of the defending team. Last place standing Black Star उनको भी बहुत ही कमाल के हेडशॉट के साथ मैं कहूँगा टेक डाउन किया गया है मिड डोर के एंगल की तरफ से एंड 2-1-2 का स्कोर लाइन a close game, another close game in fact I should say that we can expect right here Ethereus. Yes, absolutely. And देखा जाए तो they are holding their angles very carefully because just like in the last map, we get to see that they tried to study the. All right, we get to see a timeout here coming from Eternus again. I believe one of the players are disconnected. But yes, talking about his strategies, they are focusing upon holding the angles very carefully. They are also trying to ensure that the mid, जो बहुत crucial position लाता है, that does not fall out of control for Team Eternus. And for that, they are always focusing one agent to look there and to bring out the information, which is why Killua is not being able to take out much of the frags here. But again, talking about it, I'm pretty sure Devik is doing a fabulous job, I believe, because Devik coming from the very first round, he's been dominating, absolutely dominating with 7 frags entirely. On the other hand, we get to see the Viper, DT Eternus, who's currently disconnected for a particular reason, and I believe they are requesting for a pause. But yes, DT Eternus has been a crucial player for them right now. Indeed, the Viper player, as I was saying कि मैं खुद Viper खेलता हूँ तो मैं उन पे भी ध्यान रखूंगा and in fact they are coming on the top. यहाँ पे I think थोड़ा सा pause हमको देखने को मिलेगा. Every time I cast a match, when I'm casting an online tournament, well, not in the LANs, the last LANs that I casted, but then again on the online tournaments, it is very, what do you say, common to get such technical issues. Especially we all know
इंडिया में ऐसे इश्यूज चलते रहते हैं, मेड भी इंटरनेट, मेड भी इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज। तो यस, उसका यहाँ पे थोड़ा सा हमको प्रूफ और देखने को मिलेगा इस टेक्निकल पॉज के साथ। बट यस, द गेम विल कंटिन्यू इन अ फ्यू मिनट्स एज सुन एज द प्लेयर इज बैक। तब तक मैं बात करूं अगर इथेरियस, तो एज आई वाज सेइंग कि हमको डबल इनिशिएटर देखने को मिल सकता है, एंड वी हैव अ सोवा एंड अ स्काई राइट ऑन टू द टीम ऑफ इटर्नस। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, इथेरियस? Yeah, absolutely. Considering Sky and Silver, it's a royal combination according to me because Sky के साथ आप heal कर सकते हो and you get the flashes, which is very important while entering a site or defending or holding right. On the other hand, with Sova, you get together all the information, like the detailed information you require for a site, and that gives you precise information कि आपके enemies कौन कहाँ पर है, and on that basis you could make the adjustments of your holding. So yes, indeed, Economist is playing a very safe round here. Like sorry, now we can also get to see that team TM, they are having an equal round, but Killua has decided to spend money since he already has on a vent. So let's just see how Killua goes because from all of the past few rounds, I'm seeing that Killua is trying to find an opening in the mid, but although it has been punished very precisely, but Killua, if he gets a particular part in the mid, then I'm pretty sure that he might get an opening for the entire TM. Indeed, but then again, Eternus is there to deny that. Already उनका जो मोमेंटम है वो पिछली गेम से काफ़ी ज़्यादा हाई है, इस पे तो हम बिल्कुल एग्री कर सकते हैं। इवन दो यहाँ पे हमको हीरो परफॉर्मेंसेस स्टार्टिंग ऑफ द राउंड से देखने को मिले हैं टीम टीएम की तरफ से, और डेविक कमिंग इन विद दैट 4K 1v2 क्लच, बट उस चीज़ ने भी यहाँ पे अभी तक इटर्नस को रोका नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने आखिरी 2 राउंड खेले हैं एंड इटर्नस को काफ़ी अच्छे तरीके से किल ऑफ किया है एक-एक करके। वेल, लास्ट राउंड थोड़ा सा क्लोज जरूर गया था, बट इट वाज एज क्लोज एज अ 1v2 जिसमें डीटी ने ही 3 किल निकाले थे। एंड टॉक ऑफ द डेविल, एंड डेविल इज बैक। इसी के साथ डीटी गेम में वापस आ जाएंगे जो कि डिस्कनेक्ट हुए थे, और जो हमारा राउंड है वो शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे बात करूं अगर फिर से एक बार मैप की, तो हमको ब्लैक स्टार थोड़ा सा लर्क करते हुए नजर आ रहे हैं एंड मिक्स्ड बाइज है यहाँ पे। किलो के पास सिर्फ एक वेंडल अवेलेबल है, 2 शेरिफ्स हैं, देन एक मार्शल है और सुसाइडल मिडास यहाँ से थोड़ा सा डैमेज, इनफैक्ट काफी ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट करते हुए जेट के ऊपर अपनी शेरिफ के साथ बहुत ही ज़्यादा कम एचपी पे छोड़ा है। एंड स्काई अवेलेबल है हील के लिए, स्काई प्लेयर भी पीछे आ रहे हैं, बट दे जस्ट डोंट वांट टू लीव देयर पोजीशंस येट। तो हील के लिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा वॉइड को। ब्लैक स्टार ने अपना अल्टीमेट जो है पॉप कर लिया है, टोडे 4 के साथ कमाल दिखाने की कोशिश करेंगे। माइटी इज देयर ऑन द मिड, किलुआ फाइनली गेटिंग दैट स्पेस बाय किलिंग माइटी, और यहाँ पे सडन मिडास भी खुद लो हो चुके हैं। डीटी का मोमेंटम इस टाइम पे काफी हाई है, यहाँ पे बढ़िया फ्रैग्स निकाल सकते हैं मिड की तरफ से इफ ही गेट्स द चांस। ब्लैक स्टार टेकिंग डाउन यूबी, बट डीटी एज आई सेड आइस कोल्ड को टेक डाउन करेंगे खुद। हाफ एचपी पे आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ए भी ओपन हो चुका है, मिड पे भी एक फ्रैग जा चुका है। ब्लैक स्टार ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टेक डाउन द लास्ट डिफेंडिंग प्लेयर on the A side, while Shalon with his mind games डेविल भी आप निकाल सकते थे, बट उनसे ही बेट हो गया और ब्लैक स्टार के ऊपर किल निकालेंगे। इसी के साथ मिड और ए पूरे तरीके से खुल चुका है, सारे प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। वर्ड इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, जो कि स्टार्टिंग से ही हील का वेट कर रहे थे सीरियस, और उनको वो मिला नहीं। आई थिंक पहले ही और रोटेट कर जाना चाहिए था इनको, जब ऑलरेडी एक प्लेयर को ब्लैक स्टार टेक डाउन कर चुके थे। एंड आई थिंक ही इज गोइंग फॉर अ सेव, बट ही इज गोइंग टुवर्ड्स द अटैकिंग साइड। इट स्पॉन देखते हैं यहाँ पे एग्जिट ट्रैक्स निकालने की कोशिश करते हैं, और इफ ही एक्चुअली वांट्स टू गो फॉर दैट 1v4 क्लच एट 13 HP। बट देन अगेन दिस वाज क्वाइट अ राउंड, जिस तरीके से मिड का कंट्रोल लिया गया एंड ए का कंट्रोल लिया गया है सीरियस। Yes, absolutely, and we get to see a good headshot coming from Killua itself. And like I said before to you, AK, Killua was looking for an opening in the mid, जिसके वजह से टीम TM को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है इस राउंड के लिए। एंड लेट्स सी इफ दे आर गोइंग टू गो विद द सेम फॉर्मेशन और दे आर गोइंग टू मेक सर्टेन चेंजेस। बट एक चीज़ तो है, बिकॉज ऑफ Killua as well as because of Black Star, they have got a huge advantage. Because Jet को heal चाहिए था, but it was Black Star who was stopping her in the end. So yes, now we get to see Operator into round, but now it goes down by Devik itself. Let's see how it goes. Mighty Eaton is waiting for it, but Mighty Eaton goes down, and Devik is entirely aggressive. But Devik goes down here, and we get to see that Team TM has entered the side already. But now UB goes down, and
we have a what a round by Team TM. This is all they were waiting for. They were also trying to build up the momentum, AK, and I can see that they are building it up. What do you think about it? Well, indeed, Davik absolutely being the devil here, I can say. जिस तरीके से वो पहला शॉट उन्होंने कनेक्ट किया, I'm absolutely impressed. और सेकंड एंट्री भी निकालते हुए फॉरवर्ड गए, उसके बाद जाके ट्रेड ऑफ हो गए. बट ब्लैक स्टार वाज लाइक ओके, यू हैव गिवन मी द कॉन्फिडेंस एंड आगे का मैं खुद ही संभाल लूंगा. 2 प्लेयर्स ही लिटरली पूरी टीम को टेक डाउन कर गए एंड दे आर फोर्सिंग इटर्नस ऑन टू एन इको राउंड. यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा साथ रह के खेल सकते थे, बट माइटी का टूर डे फोर्स ऑनलाइन है. उसी के साथ एक फ्रैग निकाल लेंगे. सबसे पहले डेविड को शट डाउन किया है, तो द मेजर थ्रेट इज आउट ऑफ द राउंड. यहाँ पे अल्टीमेट भी पॉप कर दी जाएगी. द हंटर्स फ्यूरी कमिंग इन, बट ही वोंट गेट एनी किल. यहाँ पे टैग जरूर दिया है शैलोन के ऊपर. और अब देखना ये है कि किस तरफ ये जाते हैं, बिकॉज एज आई कैन सी यहाँ पे अभी भी ए साइड की तरफ गैदर्ड अराउंड है, इवन दो दे हैव द टूर डे फोर्स ऑनलाइन. आई थिंक रेना के फ्लैशेस को यूज कर सकते हैं. ब्लैक स्टार अपना शॉट मिस करेंगे, माइटी भी अपना फ्लिक मिस करेंगे. एंड इसी के साथ सुसाइडल मिदास हैं जो कि थोड़े से एंटी पोजीशन पे किल जरूर निकाल सकते थे. एंड किलुआ ट्राइंग टू मेक सम स्पेस विद द यूज ऑफ दोस फ्लैशेस. और यहाँ फ्लैश करके फॉरवर्ड आएंगे शैलोन, बट किलुआ उनको टेक डाउन करेंगे. से वॉइड भी वहां पे रेडी है अपनी अल्टीमेट के साथ. माइटी गेटिंग अनदर किल. आई डोंट नो उन्होंने स्मोक थ्रू कैसे किल निकाला, बिकॉज आई डोंट थिंक आइस कोल्ड वाज रिवील्ड इन दैट रिकॉन. एक और प्लेयर को स्पॉट किया है यहाँ पे. किलुआ के ऊपर फ्रैग निकालेंगे. जी हां बिल्कुल. मीनवाइल टीटी टेकिंग डाउन ब्लैक स्टार विद अ ब्यूटीफुल हेडशॉट. द लास्ट मैन स्टैंडिंग इज सुसाइडल मिरास एंड यहाँ पे फुल एचपी पे हैं, बट स्पाइक ड्रॉप हो चुका है. माइटी कमिंग इन विद अ ब्यूटीफुल 4K फॉर द राउंड एंड गेटिंग अ थ्रिफ्टी विन. काफी बढ़िया यहाँ पे राउंड हमको देखने को मिला है गाइस. और माइटी के यहाँ पे जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. एकदम परफेक्ट पोजीशनिंग और एक शॉट को छोड़ के सारे परफेक्ट शॉट्स यहाँ पे हिट किए उन्होंने. 5 गोली में से 4 फ्रैग्स निकाले हैं. आई डोंट नीड टू मेंशन एनीथिंग एल्स. और यहाँ पे थोड़ी सी अब इकोनॉमी जो है खुद की भी बिल्डअप किया. हालांकि अभी भी एक ऑपरेटर ऑनलाइन है ब्लैक स्टार के पास. एक अच्छा रिकॉन यहाँ पे 20 साइड की तरफ जाता हुआ, जो कि बैक साइड का इन्फो थोड़ा सा है जरूर निकाल के देगा, बट कोई भी प्लेयर उसके अंदर नहीं आएगा. हम देख सकते हैं चारों के चारों प्लेयर रोटेट कर चुके हैं. शैलोन अलोन प्लेइंग ऑन द मिड एंड इन फैक्ट ही इज प्लेइंग इट टू द परफेक्शन विद अ ब्यूटीफुल हेडशॉट राइट ऑन टू डेविक. डेविक को बार-बार ध्यान रख रहे हैं कि उनको राउंड सबसे पहले निकाला जाए. एंड माइटी स्टिल परफॉर्मिंग विद द ऑपरेटर. सुसाइडल मिदास को भी टेक डाउन करेंगे. दैट इज द कंट्रोलर आउट ऑफ द गेम फॉर द अटैकिंग साइड. मिड पे थोड़ा सा गेम प्लान फोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. ब्लैक स्टार को एक प्लेयर का इन्फो जरूर है, बट वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई उनके क्रॉस हेयर के अंदर आए, कोई उनके स्कोप के अंदर आए, तो उनको वहाँ पे एक फ्रैग मिले. जीटी को यहाँ पे इन्फो मिल चुका है एक और प्लेयर का, दैट इज गोइंग टू बी रेना. एंड वो भी थोड़ा सा स्पैम देके फॉल बैक करेंगे. काफी लो एचपी पे ला दिया गया है, बट डीटी गेटिंग अनदर ब्यूटीफुल हेडशॉट ऑन टू किलुआ. ब्लैक स्टार ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट गेट दैट फ्रैग ऑन शैलोन, मेकिंग some good use of his operator, but so far he has been a bit unfortunate with his shots. एक अच्छा फ्लैश यहाँ पे इन्फो निकालने के लिए, ब्लाइंड करने के लिए, but Black Star finally performing, taking down Mighty who was the operator for the defending team. लेकिन एक 2v4 सिचुएशन में फंस चुके हैं. पीछे बैक स्टेप में ट्रैप को स्मोक करके फॉरवर्ड आ चुके हैं और इसी के साथ आइस कोल्ड अकेले बचेंगे. एंड बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो ये बैक स्टेप एक किल जरूर निकाल लेंगे. उनको जेट का फुटस्टेप जरूर आ चुके हैं, उनको भी टेक डाउन करेंगे, बट he is not expecting DT, or is he? No, he won't, and DT will get a simple kill. और इसी के साथ जो दो खतरनाक से राउंड हमको देखने को मिले थे TM की तरफ से, उनको फिलहाल इक्वलाइज कर दिया जाएगा 4-4 की स्कोर लाइन के साथ. Yes, absolutely. And here's the biggest part about DT Eternus. DT is focusing a lot upon flanking. पहले उसको देखा जाए तो he was focusing a lot on the B side, but now उनको देखा जाए तो he's now focusing upon flank and now coming towards B. So देखा जाए तो he knows that Killua or some other agent might try to focus upon mid, and mid is a huge part of B. So now let's see how it goes. Here comes the reveal, and we already have Void holding it up, but David entering the side. But oh my god! But now Void goes down. Now we get DT Eternus coming with 2 kills. Last player standing.
But now, none other than CP Eternus. Or another round goes for Team Eternus. What do you think about it? Well, DT is on fire. It might be a bit of an exaggeration to say this, but I think it kind of reminds me of Amaterasu's clutch that was in a similar position. This is not a clutch situation, not at all, but जिस तरीके से उन्होंने aim करके headshots connect किए वहाँ पे spray down पे 2 kills निकाले, थोड़ा सा वो एक Amaterasu वाला vibe आया जो कि VLT के professional player हैं जिन्होंने एक काफी अच्छा clutch निकाला था इसी angle से. तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा फील आया यहाँ पे कि ओ माय गॉड DT is playing a bit similar. तो यहाँ पे जरूर DT is feeling himself topping the leaderboard with 14 frags as the controller. But what else you need here from your Viper player? और इसी के साथ हम देख सकते हैं यहाँ पे फिर से B commit किया जा रहा है. DT इस बार भी रेडी है लेकिन इस बार थोड़ी सी स्लो अप्रोच हमको देखने को मिल रही है. वहाँ पे शैरॉन मिड की तरफ इन्फो निकालेंगे बट यहाँ पे डैशेस आते हुए फ्लैशेस आते हुए इसी के साथ वॉइड जो है इस बार किलो के ऊपर किल कंफर्म करेंगे. डेविक जाएंगे इस बार और कंफर्म करेंगे कि वो टीटी को टेक डाउन करें साथ में वॉइड को किलो डाउन करें. Yes, absolutely. You're absolutely right. But this was indeed a huge reaction from my side because Devik entering the side and killing both the players, it was amazing. Indeed, and they indeed have the round pretty much in their favor. Ethereus हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक स्टार का काफी अच्छा पोजीशन है. उनको बैक स्टेप का भी इंफॉर्मेशन मिल चुका है. That is going to be Shalon trying to cover it up from behind. Mighty के ऊपर आराम से किल निकाल पाएंगे. He was trying to sneak in towards the side and Shalon missing his spray but finally getting it back. 1v2 situation में है. Flash एक जरूर available है उनके पास. Well, he pops the ultimate instead. उनको दोनों प्लेयर का इंफॉर्मेशन मिल चुका है. एक प्लेयर को टेक डाउन करेंगे. He is in a 1v1 situation. Time is running out. ज़्यादा टाइम नहीं बचा है but Devik is right around the pillar. He can peek him and kill him and he will. इसी के साथ completely यहाँ पे 3 फ्लैग के साथ शट डाउन करेंगे डेविक और ये राउंड अपने फेवर में लेंगे. हालांकि खुद को नहीं बचा पाए बट दैट वाज इंडीड अ नाइस ट्राई बाय शैलोन. यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मौजूद होता तो कुछ भी हो सकता था बट ऑल इन ऑल वंस अगेन अ नाइस ट्राई बाय शैलोन. Yes, absolutely. And देखा जाए तो डेविक जैसे aggressive हो जा रहा है, it was very much unpredictable by all of them. Although they were predicting him कि वो side पे घुसे and he would take out a frag or 2, but yet they are not being able to counter it right now. But now we get to see DT Eternus coming with none other than his Viper's Blade, I believe. Sorry, Viper's Salt. And DT Eternus holding the side very carefully. Now they get the information, but Devik takes down. DT Eternus takes down Devik, which is a huge threat to them. Now Killua goes down. What a shot! Like spamming through the wall. That was indeed amazing. Spike planted. Now the spike gets planted. They get the information where he is. Ice Cold being very careful here. Let's not forget that. One goes down. Black Star takes one down. There's 2 more, but let's not forget what Standing. there's standing. But let's see how Eternus will take the math here. Black Star takes him down, and another round goes to none other than Team TM. What do you think about it, AK? Last Like they round are before the focusing. switch. Like both teams are very much equalizing the scores. Like they are playing head to toe. Like entirely. Well, indeed that's a head to head game and बिल्कुल एडी छोटी का दम यहाँ पे लगाया जा रहा है दोनों ही टीम्स की तरफ से. एक यहाँ पे आई थिंक डीटी की तरफ से अगर मैं एक चीज पॉइंट आउट करूँ तो जब उन्होंने वाइपर स्पेट अपना डाला तो उसके साथ ही अगर स्नेक बाइट डालते तो वहाँ पे वो जेट रेना एंड बाकी प्लेयर जो कि स्नेक इन किए तो वो नहीं कर पाते बिकॉज ऑलरेडी वल्नरेबल होते हैं एंड स्नेक बाइट में ही मर सकते थे. बट वहाँ पर थोड़ा सा यूटिलिटीज को सही से प्रयोग किया जा सकता था लेकिन वेल अ राउंड गॉन इज अ राउंड गॉन विद ब्लैक स्टार हैविंग अ ब्यूटीफुल 4th किया इन द प्रीवियस राउंड. और इसी के साथ अब नेक्स्ट राउंड आ चुका है एंड हम देख सकते हैं इस बार बी की तरफ से फिर से यहाँ पे शोर मचाया जा रहा है बट इट इज गोइंग टू बी अ फेक एज 2 players are going towards the A side with the spike and A side is completely clear for them. That is going to be Black Star and Killua. Meanwhile, Ice Cool taking a frag towards the top mid area. Mighty को take down कर दिया गया and सारे के सारे प्लेयर आराम से पीछे जा रहे हैं. They know they have the side. They don't need to give any kind of trade potential to the opponent team. और इसी के साथ यहाँ पे काफी गंदी सिचुएशन में मैं कहूँगा फंस चुके हैं because it is going to be a
लिए 45 रीटेक एंड कंप्लीट साइड कंट्रोल है यहाँ पे। मिड पे आइस कोल्ड अवेलेबल है, पहले उनको उनसे भी डील करना पड़ेगा एंड फिर रीटेक का सोचना पड़ेगा। एंड आइस कोल्ड वेल गेट्स टेकन डाउन एज आई से दैट, बट डेविक यहाँ पे केओस क्रिएट करते हुए थोड़ा सा वॉइड को टेक डाउन कर चुके हैं। शेलन के पास एक बुलडॉग अवेलेबल है यहाँ पे, डेविक को जरूर टेक डाउन करेंगे। मीनवाइल स्वेरन मिडास गेटिंग द बेटर ऑफ डीटी राइट देन एंड देयर। Player standing. UV was coming forward, Black Star came down and got the final kill on Shalon as well। इसी के साथ यहाँ पे हाफ जो है 7-5 की स्कोर लाइन के साथ फिनिश किया जाएगा। 2 राउंड्स की लीड ले चुके हैं एंड नाउ इट्स टर्न फॉर इटर्नल्स टू अटैक ऑन द साइड्स एंड टीम TM will be defending। Yes, absolutely, AK. And what we get to see is that if we spectate upon DT Eternus, we get to see he focuses a lot upon holding the enemies, but if they rotate, he goes directly for flanking, and that's something that the enemies do not predict it so easily. Like holding a particular side, they usually predict they will come directly to the side to hold them off as a controller, but as Viper going in the flank, it's something very unpredictable for almost both the teams, and that I believe makes Team Eternus very much different from the other teams. Now we get to see the beginning of the next round. We get to see Davik. Yes, but Davik has been attacked a lot, gathering a lot of information regarding David. Blinded. Now we get to see a plant coming here. DT Eternus again coming with a flank. He's Davik and Davik goes down. Oh, Black Star also goes down. What do you think about it, AK? One enemy Well, that remaining. was indeed some amazing shots coming in from DT right then and there. Beautiful headshots right onto their opponents' heads. और इसी के साथ सुसाइडल मिदास बचे हैं एक 1v3 situation में, which is going to be absolutely difficult, but he is trying to make it look easy as he takes down Void with a नाइस हेडशॉट। 2 प्लेयर्स बचे हैं बट काफी बढ़िया क्रॉस फायर दोनों के दोनों प्लेयर्स मेंटेन कर रहे हैं। इसी के साथ डीटी को दोनों ही प्लेयर्स का इन्फो आ जाएगा। शैलोन उनको टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं बट सुसाइडल यहाँ पे डीटी को टेक डाउन कर चुके हैं। शैलोन trying to hold him off with the flashes and he will get the frag as well। इसी के साथ पहला राउंड अपना सिक्योर करते हुए और एक स्टेप लेते हुए लीड कवर अप करने में। बट टॉकिंग अबाउट सम मोमेंट्स ऑफ दिस राउंड इथेरिया, जो फर्स्ट में हमको ब्लैक स्टार को देखने को मिला, नो डेविक वाज स्ट्रगलिंग टू गेट अ हेडशॉट एंड ब्लैक स्टार वाज लाइक इधर मैं बताता हूं कैसे हेडशॉट लेते हैं, एंड टुक द हेडशॉट, टेलीपोर्टेड बैक एंड देन डीटी कमिंग इन विद अ ब्यूटीफुल 3k, दोस वन टैप्स right onto the heads of Black Star and another player। वहां पे that was indeed very very impressive। Yes, indeed. Considering in the previous map how DT was playing, he was playing in a very progressive, in a very holding the side position. He was not going much aggressive, but here as Viper, we get to see him going entirely aggressive, and that is something very different, which we do not get to see as Viper agents. Me playing Viper in certain maps, I do not prefer that because I see that if I die, my team would be in deep trouble. So, but here, DT is being very careful, and DT and Void takes down suicidal middles. We also get to see Davik taking down one by none other than a classic. He goes to 2. He takes 3, and let's see how Davik will go. Last player standing. Davik goes enemy with remaining. classic. Now he takes a bulldog. Let's see how it will go. Well, You he will is get trying to it. close in and he will get, oh my god, 21 HP, It- UP, what? Oh my god, it was supposed to be an Is A, but it got He cancelled. whiffed. No way, David whiffed after such a beautiful performance with the classic, those headshots, but he whiffed in the Indeed. end. But absolutely, he did make a nightmare come true almost for the ओपोनेंट टीम। यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने फ्रैग्स निकाले टर्नस के अगेंस्ट 4 किल निकाल चुके थे एंड लास्ट तक आते आते क्लच भी कर सकते थे। आई एम सीरियसली नॉट श्योर, जिस तरीके से मैंने फर्स्ट शॉट उनको मिस करते हुए देखा यूबी को, आई थॉट ही इज जस्ट डेड, बट ही गॉट द बेटर ऑफ इट। और इसी के साथ स्कोर लाइंस जो है इक्वलाइज हो चुके हैं, बट दोनों ही टीम्स के पास अब से सिमिलर इकोनॉमी हमको देखने को मिल रही है एज दे हैव इन्वेस्टेड इनटू वेंडल्स एज वेल। दैट इज गोइंग टू बी टीम इटर्नस एंड टीएम ऑलरेडी 2 राउंड्स हारे थे, तो यस उनका तो बाय राउंड आना बनता ही था। सो यस, इटर्नस इज नॉट गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ बोनस राउंड्स
एंड मैं उनकी गेम प्ले की बात करूं तो यहाँ पे ए पे थोड़ा सा फेक सेटअप कर रहे हैं, बट लुक एट द सेटअप फ्रॉम द डिफेंडिंग टीम। यहाँ पे मिड पे 2 प्लेयर्स मौजूद हैं। सुसाइडल मिदास प्लेइंग इट अ बिट सुसाइडल, गोइंग बैक बट किलवा इज देयर टू कवर हिम। यहाँ पे आराम से एक किल निकाल के डिसमिस करेंगे और पीछे जाएंगे। एंड यहाँ पे डेविक का फॉरवर्ड आ चुके हैं, पोजीशन उन्होंने होल्ड की हुई है, बट 3 प्लेयर उनके सामने आ जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे डेविक वहां पे। इसी के साथ यहाँ पे जो मैन एडवांटेज था वो इक्वलाइज हो जाएगा। एंड वी कैन सी अगेन द वाइपर फ्रॉम द ए साइड इज ट्राइंग टू पुश इन एज द चेंबर इज डाउन। तो यस, वहाँ पे उनको वो स्पेस जरूर मिल सकती है। बट बात करूँ यहाँ पे टीम इटर्नल्स की, तो सारे के सारे प्लेयर मिड टू ए यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आर दे गोइंग टू बी अवेयर ऑफ द पोजीशन ऑफ द वाइपर। यहाँ पे फ्लैश जरूर पॉप किया है, तो यस उनको पता लग जाना चाहिए। ट्रेल ब्लेजर भी करेंगे जस्ट टू कंफर्म हिज प्रेजेंस और आराम से जाके शैडो उनके ऊपर एक किल निकाल लेंगे। हाई स्कोर यहाँ पे ब्रिज पे जरूर आ चुके हैं, रोटेशन भी साथ में आता हुआ, लेकिन हम देख सकते हैं कि डीटी पीछे से आ रहे हैं। यहाँ पे स्प्रे ट्रांसफर थोड़ा सा मिस करेंगे और अपनी जान भी खो बैठेंगे, लेकिन एक किल उन्होंने जरूर निकाला। हाई स्कोर को भी सिग्निफिकेंटली लो एचपी पे ला के खड़ा कर दिया है उन्होंने। 2v3 सिचुएशन बचा है। वॉइड फिर से एक काफी उम्दा पोजीशन पे हमको नजर आएंगे, उनके टीममेट्स भी उनको सहारा देते हुए। ब्लैक स्टार चैनल के ऊपर एक किल जरूर निकालेंगे। दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रेड फॉर आइस कोल्ड। बट यहाँ पे यू भी मौजूद हैं जो कि ब्लैक स्टार को टेक डाउन करेंगे और वॉइड अपनी पोजीशन रिवील करेंगे, टेलिंग देम कि अगर तुम उस प्लेयर को भी टेक डाउन कर देते तो वॉइड वाज रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। इसी के साथ टीम इटर्नल्स फाइनली गेटिंग बैक इनटू द लीड। यहाँ पे एक राउंड जो है उन्होंने जीत लिया है। एक्स्ट्रा 7-8 का स्कोर लाइन हो चुका है। एंड एक इको राउंड को देखने को मिलेगा टीम की एम की तरफ से। एक मार्शल में इन्वेस्ट किया गया है, 3 शेरिफ्स में इन्वेस्ट किया गया है और सारे प्लेयर्स के पास हाफ शील्ड्स हैं। इनफैक्ट डेविक के पास एक क्लासिक है, बट उनके पास इस बार उनका ब्लेड स्टॉर्म भी है, तो यहाँ पे ब्लेड स्टॉर्म के साथ बिल्कुल हैवक क्रिएट कर सकते हैं वो इथेरियस। Is absolutely, and देखा जाए तो we have none other than the Blade Storm activated by Davik, and as we've always seen Davik being the aggressive one. Let's see कैसे वो Blade Storm का इस्तेमाल करे. We already get to see that he's trying to beat an anti-flash here. On the other hand, Void is being aggressive here, and DT Tunis as he's trying to cover up the mid, and he goes straight towards B side again. Black Star coming with a Marshall, and Black Star goes down. Now here comes a flash from side of the leaders. Now Davik also goes down. Let's see how it will go. What? Oh my god. that was a bit funny, sorry. He's like, अरे उधर से नहीं, मैं तुझे पास आके मारूंगा। Indeed. बट देन अगेन यहाँ पे एक और राउंड आ चुका है टीम इटर्नल्स के फेवर में, 2 राउंड्स के लीड लेते हुए। बट अब हमको एक बाय राउंड देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे ब्लैक स्टार के पास सिर्फ एक अल्टीमेट ऑफ बचा है अपना टोर फोर्स एक्टिवेट करने के लिए, बट डेविक ऑलरेडी एक ऑपरेटर में इन्वेस्ट कर चुके हैं। सो लेट्स सी उनका रीड कहाँ को रहता है। ए साइड की तरफ ही जा रहे हैं एंड टीम इटर्नल्स भी थोड़ी सी ए साइड की तरफ ही गैदर हो रखी है। बट आई थिंक यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक पॉज देखने को मिलेगा एज one of the players that is going to be the jet from the attacking team, that is Void, उनको शायद रीस्टार्ट करना है। तो यस, थोड़ा सा एक फिर से हमको टेक्निकल पॉज मिलेगा यहाँ पे दोस्तों। बट then again, talking about the match itself, it is indeed going head to head and it is going close as well. बट यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे ऑलरेडी एक मैप पॉइंट की लीड है टर्नर्स के पास। तो जिस तरीके से अभी खेल भी रहे हैं वो इथेरियस, दे डोंट थिंक कि वो चाहते हैं कि थर्ड मैप तक ये गेम भी जाए। बट डेविक और ब्लैक स्टार यहाँ पे जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, 19 फ्रैग्स 17 फ्रैग्स, दे आर एब्सोल्युटली ट्राइंग टू डिनाई देम विद द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। बट यहाँ पे आपको क्या लगता है, एक मिड राउंड सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शन की यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल मैप, और डू we actually get to see the final map? Frankly speaking, Valorant is a game जहाँ पर आप श्योर भी नहीं हो सकते कभी भी headshot लगता है या नहीं. Always your cross is always there. So in that case, considering that as a premise, I don't think we can predict anything because Black Star and Davik, they are going absolutely bizarre. But on the other hand, Team Eternus is a particular team we have been acquainted with in terms of having comebacks, and those comebacks are very much strong. So let's see how it goes. I'm pretty sure Team Eternus will try their best to ensure that it ends with 2-0, but I'm pretty sure that Davik goes, and like you said before, Davik is absolutely bizarre. Davik has taken one already, but DT Eternus again coming with a flank.
And now here comes Sky, but now DD Eternus cancelling Davik out, knowing that he can be a huge threat. What do you think about it, AK? DD Eternus as the flank. What do you think about it? Well, he's doing an absolutely wonderful job with the flanking, getting those frags for his team. लेकिन यहाँ पे फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा वीक पड़ चुके हैं टर्नर्स इस राउंड के लिए एज 2v3 सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो इट इज गोइंग टू बी अ रीटेक लेकिन देखते हैं यहाँ पे माइटी का जो पोजीशन है आई थिंक किलुआ ने उनको स्पॉट नहीं किया एंड ही विल गेट द किल दैट इज गोइंग टू बी आइस कोल्ड यहाँ पे 1v3 में है यूवी एंड किलुआ विल टेक हिम डाउन एज वेल इसी के साथ एक सक्सेसफुल रीटेक यहाँ पे आता हुआ टॉकिंग अबाउट डीटी वो फ्लैंक्स तो सही कर रहे हैं बट यहाँ पे जो फ्रंट फाइट है वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है एज डेविक वाज लिटरली क्रिएटिंग अ हैवॉक विद हिज ऑपरेटर स्किल्स वहाँ पे अगर डीटी ना होते तो शायद वहाँ पे और भी फ्रैग्स निकाल सकते थे और डेविक लेट्स सी इस राउंड में अगर वो ऑपरेटर ऑनलाइन ला पाते हैं जी हाँ बिल्कुल उन्होंने फिर से ऑपरेटर जो है बाय कर ली है एंड लेट्स सी इस बार वो जाते कहाँ पे हैं बिकॉज as long as I can see यहाँ पे थोड़े से मिड की तरफ गैदर हो रहे हैं थोड़ा बी की तरफ गैदर हो रहे हैं टीम इटर्नल्स के प्लेयर्स एंड Midas is going to be ready for them with his Viper's Wall एंड उनके साथ किलुआ भी मौजूद हैं तो बस देखना ही है कि किस तरफ ये राउंड जाता है एकदम फास्ट कमेंट में हमको देखने को मिल सकती है एस्ट्रियल ब्लेजर इज कमिंग ऑनलाइन फ्रॉम द साइड ऑफ स्काई और यहाँ पे कितने प्यारे तरीके से देखिए थीरियस अपनी वॉल के अंदर वो छुपे हुए हैं बिल्कुल भी उन्होंने अपना पोजीशन जो है वो नोन नहीं होने दिया बट अब उनका वॉल नीचे जा रहे हैं एंड ड्रोन इज कमिंग इन क्या उनकी टीम उनके लिए ड्रोन तोड़ पाएगी जी हाँ बिल्कुल भी स्पॉट नहीं हुआ एक किल निकालेंगे डेविक उनका सपोर्ट करते हुए एक और किल निकालेंगे सुसाइडल मिजाज गेटिंग अनदर फ्रैग एज वेल किलुआ यहाँ पे एक और फ्रैग यूपी के ऊपर निकालेंगे माइट इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग एंड ही इज ऑन अ वेरी लो एचपी राइट नाउ एंड आई थिंक दिस राउंड इज रन फॉर हिम और इसी के साथ हमको शायद एक हेड टू हेड स्कोर लाइन फिर से देखने को मिल सकती है यहाँ पे भाग के सिटी की तरफ आ चुके हैं ब्लैक स्टार के जस्ट पीछे हैं क्या उनको यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाएगा क्या उनका ये जो गेम प्ले उन्होंने अनफोल्ड किया है वो भी उनके क्लच को सक्सेसफुल करेगा वन टैप के साथ टेक डाउन जरूर कर दिया है बट दोनों ही प्लेयर्स को उनको इन्फॉर्मेशन मिल चुका है किलुआ ऑफ लगा के बैठे उनके ऊपर और शॉट भी कनेक्ट करेंगे एंड एज आई सेड हेड टू हेड स्कोर लाइन 9-9 का स्कोर लाइन हमको देखने को मिलेगा एक बेहतरीन राउंड के साथ Is absolutely और अगर देखा जाए तो they are also coming with a comeback and ये comeback बहुत भारी पड़ रहा है none other than on team Eternus because देखा जाए तो the Viper which is going very strong DT Eternus who's going very strong here on the other hand उन लोग For you, hermanita. Indeed, I do agree with you. वहाँ पे डीडी बहुत ज़्यादा कमाल का गेम प्ले अनफोल्ड कर रहे हैं एंड यहाँ पे डिफेंडिंग वाइपर ने भी अपना You want to play? Let's play. Toxin screen down. और इसी के साथ हम देख सकते हैं ब्लैक स्टार यहाँ पे 2 किल निकालते हुए डेविक ने भी 1 किल ले लिया है आइस कोल्ड राउंड को खत्म करेंगे क्या ही कमाल का राउंड हमको देखने को मिला है डिफेंडिंग टीम की तरफ से इथेरियस दे आर एब्सोल्युटली फीलिंग इट बहुत ही हाई मोमेंटम और यहाँ पे इकोनॉमी भी बहुत ही कमाल की तरफ से तरीके से डेवलप हो चुका है यस एब्सोल्युटली और देखा जाए ब्रीज जो ऐसा मैप है जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फ्लैंक कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा दे आर इंश्योरिंग कि एंटी फ्लैंक्स रहे हर जगह पे एंड ऑन द अदर हैंड दे आर ऑल्सो मेकिंग श्योर कि जो डिफेंस है हेल्प वेरी एग्रेसिवली so abhi we get to see that the entire team Eternus come focusing on mid but now Davik takes one Davik might be taking another one Here. On the other hand, blade storms have been activated by Void, but Davik takes 2 DT Eternus, who has been considered a huge threat for the team. On the other hand, now they are focusing upon holding the side. Killua, who's trying to gather all the information here. Now Killua takes on Void Eternus, and oh my god, one enemy what remaining. a shot! Now another round goes for none other than Team TM. What do you think about it? Having a strong comeback, like starting में head to head थे, but now as defense they are going very strong here, especially with Davik who has an operator in hand.
he is making sure that it is being utilized at its full potential. What do you think about it, AK? Well, indeed, Devix, the protocol operator is being absolutely loyal to him. एक के बाद एक फ्रैग्स निकालते हुए नजर आ रहे हैं हमको. एंड रीड देखिए, हर जगह जहाँ पे प्लेयर आ सकते हैं वहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं डेविक. इस बार पिलर के ऊपर चढ़ के खेल रहे हैं. यहाँ पे ए का वॉल ऑलरेडी आ चुका है अटैकिंग टीम की तरफ से. एंड क्या ये एंगल एक्सपेक्ट करेंगे? वेल, रिकॉन कोई भी उनके लिए ब्रेक नहीं कर रहा है. फ्लैश भी हो चुके हैं और इसी के साथ उनको फॉल बैक करना पड़ेगा. बट ही इज वंस अगेन गोइंग फॉर द फॉरवर्ड ट्रेड्स. लेकिन खुद के वाइपर के स्मोक ऑफ के साथ ही वो थोड़ा सा ब्लॉक ऑफ हो चुके हैं. प्लांट यहाँ पे दिया जाएगा बट उसी के साथ वाइपर्स का जो वॉल है अटैकिंग साइड के वाइपर का वो टेक डाउन वो नीचे चला जाएगा. यहाँ पे माइटी डेविक को टेक डाउन जरूर कर देंगे. किलुआ ने एक किल निकाल जरूर लिया लेकिन जो एलमिलस कमिंग फॉरवर्ड और किलुआ उनके साथ फाइनल किल निकालते हुए इसी के साथ गोइंग टू बी कि यहाँ पे हम थर्ड मैप की तरफ जरूर जा सकते हैं. थेरियस Yes, absolutely. देखा जाए तो मैं भी चाहता हूँ कि थर्ड मैप पे प्ले जाए because the longer it is, the better. But देखा जाए तो टीम इटरनस अपना फुल पोटेंशियल स्पेशली विद टी इटरनस इस मैच पे दिखा रहे. On the other hand, we get to see CS suicidal midders who is being bit careful, like bot progressive genre. He is showing the other side, being in a very unknown position. Like for example, in the previous round, we get to see that he was hiding there. On the other hand, जब ये smoke निकल गया, he just had a shot, and that was a huge advantage for the entire team. Let's see. On the other hand, Team DT is focusing upon him, but it gets created by Blackstar. Blackstar takes on 2. Kilo taking on that Void was a Eternal. collateral in fact. Indeed, and now Icebox coming up with his ult, and now Mighty Eternal is getting the information. How will he Last player connect? standing. Yes, Blackstar getting another kill. Now Mighty Eternal knowing that he is in a very turmoil position. Both of them are focusing on it, but oh my god, the spam and this Defenders round win. and this map goes to none other than Team Eternals. And now they say eat ka jawab patthar se, so we get to see in the previous map they say easy, and now here Team TM writing easy here. What do you think about it? The banters really coming in from the both ends. लेकिन यहाँ पे Devik being the devil, as I said, 27 frags पूरे तरीके से फॉरवर्ड माफ कीजिएगा फॉरवर्ड जाके अपनी टीम के लिए किल्स निकाले. उन्होंने स्टार्टिंग से ही फर्स्ट राउंड से 4K 1v2 क्लच. कोई भी वो राउंड नहीं भूल सकता है. जिस तरीके से उन्होंने ट्रिगर डिसिप्लिन किया था, अपनी पोजीशनिंग एकदम परफेक्ट करके और ब्लैक स्टार साथ में 22 फ्रैग्स के साथ बहुत ही बेहतरीन किल्स निकालते हुए. DT yes 22 फ्रैग्स विद द वाइपर, लेकिन दैट इज जस्ट नॉट गोइंग टू बी इनफ एज वॉइड की अगर हम बात करें बीइंग जेट प्लेयर ओनली ऑन 9 फ्रैग्स. वेल, ही वाज इन फैक्ट हैविंग सम टेक्निकल इश्यूज विद हिज सिस्टम. सो लेट्स होप कि इस फाइनल मैप से पहले वो जितने भी issues हैं वो fix हो जाएं ताकि we get to see another head-to-head game. The last map is going to be Icebox. Team TM will be attacking and Eternus will be defending. Guys, 39 के साथ यहाँ पे second map भी इसका खत्म हुआ है. Map score is 1-1 और इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा break. We will be back in 5 minutes. So once again, आपके refreshments अगर हैं good, नहीं है, get them back, get some rest and get ready for the final map of the first semifinals. The Kai RJ Discord channel, and make sure to join us, and also make sure to subscribe to Assam Senpai Society, who's having the 2nd year anniversary. On the other hand, Kai RJ, who's having the 1st year anniversary. Please drop your predictions. Who do you think is going to win, since we are going on the 3rd map, which is going to be the decisive map for both the teams? Drop your comments. Who do you think is going to the final?
Yep. Okay, so boys, it has come down to this. All right, guys. So we are back with the semi-final and यहाँ पे सेमीफाइनल का फाइनल मैप हमको देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी आइस बॉक्स। यहाँ पे डिफेंडिंग साइड पे हैं इस बार टीम इटर्नस एंड टीम टीएम कर रहे हैं अटैक। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ अगर इस सेमीफाइनल का, जो कि यहाँ पे एक एनिवर्सरी इवेंट है काई आरजे एंड असम सेनपाई सोसाइटी डिस्कॉर्ड सर्वर्स का। तो यहाँ पे इस सेमीफाइनल में फर्स्ट मैप बाइंड जो कि इटर्नस ने जीता एंड सेकंड मैप ब्रीज जिसपे जीत हासिल की टीम टीएम ने। एंड यहाँ पे अब हम आ चुके हैं फाइनली आइस बॉक्स के ऊपर एंड ऑलरेडी देख सकते हैं कि रेज लॉक कर लिया गया है यहाँ पे। वेल एथेरियस आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज रेज एक ऐसा एजेंट है जो कि यू नो वी आर ऑलवेज अनश्योर अबाउट द मेटा ऑफ दिस एजेंट कि क्या ये एजेंट एक्चुअली में इतना यूजफुल है क्या नहीं, लेकिन देखते हैं यहाँ पे माइटी किस तरीके से इस एजेंट को यूजफुल बना पाते हैं। यहाँ पे मैं अगर टीम टीएम की बात करूँ तो ब्रिमस्टोन में देख सकता हूँ विच इज़ क्वाइट अ वियर्ड पिक फॉर मी एज द कंट्रोलर। लेकिन यहाँ साथ में यहाँ पे जेट ले लिया गया है, सोवा ले लिया गया है, सेज पे यहाँ पे हाथ रखा हुआ है ब्लैक स्टार ने और किलुआ ले रहे हैं चेम्बर इस बार। Meanwhile, you be taking that fade. तो एथेरियस यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कह सकते हैं हमारी विश कम ट्रू एज वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि हमको फेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इंडीड यहाँ पे यूबी लेते हुए नजर आएंगे। फेड शैलोन खेल रहे हैं इस बार, इनिशिएटर से चेम्बर और डीटी ने ओमन लिया है। वेल नन ऑफ द प्लेयर्स आर प्लेइंग वाइपर। That is quite an interesting thing to see for me because I think Viper इस मैप पे भी एक you know obvious pick है। But then again let's see what the teams have prepared और इसी के साथ हम जाएंगे मैप के अंदर। So what do you think Ethereus? क्या लगता है किसकी साइड यहाँ पे ज़्यादा भारी रहेगी looking at the agents right now? Well, yes, indeed. First of all, dream come true. Yes, indeed. Fate coming here into action. I guess both of us were expecting that. But on the other hand, when you were talking about Raze is a huge advantage because not just about the aim, but Raze comes very handy when talking about utensils, say utilities and everything. Sorry about that. So when we talk about both these sides, like I'm not sure about Brimstone, but and yes, you're absolutely right कि Viper action में नहीं आ रहा. But on the other hand, we get to see the Omen अभी बहुत meta defining Asian recently बन चुका है. Although there needs to be 30 more patches, but yes, Omen is indeed strong here. And considering Icebox, even the mid with its control. So let's see how it goes for both team map because it's going to be the decisive match for both teams. And we get to see Fate coming into action already and Killua going there, now coming for the nest, and now David again coming with an aggressive part here. Now we get to see here, now DT Eternus going down. What do you think about it? Because see, like I said, Raze is someone who can use his utilities and again get a frag and then run away. So what do you think about it? Well, Oh my God. लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा फायदेमंद कुछ भी नहीं नज़र आया डिफेंडिंग टीम की तरफ से बिकॉज यहाँ पे 4 प्लेयर्स अलाइव के साथ फर्स्ट राउंड सिक्योर कर लिया है टीम टीएम ने। स्टार्टिंग से ही वो यूटिलिटीज़ जो हमको यू नो यूटिलिटीज़ का ट्रेड देखने को मिला, दोनों ही तरफ से बहुत ही कमाल के तरीके से यूटिलिटीज़ स्पैम हुए। बट team TM got the better on the side of aim. In fact, talking about suicidal मिदा से 4 फ्रैग्स के साथ लीड कर रहे हैं ऑलरेडी फर्स्ट राउंड से ही। ऑलमोस्ट सारी टीम को अकेले ही वो ले डूबे यहाँ पे। और इसी के साथ एक फोर्सफुली इको राउंड हमको देखने को मिलेगा टीम इटर्नस के साथ, जहाँ पे एक शॉर्टी में इन्वेस्ट किया गया है जिससे कि माइटी यहाँ पे थोड़ा सा गेम प्ले अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। बट किलुआ कमिंग विद द हेड हंटर्स, नॉट हंटिंग द हेड बट बॉडीज, बट ही इज गोइंग टू बी गुड इनफ फॉर द फ्रैग्स दैट आर रिक्वायर्ड राइट देन एंड देयर। यहाँ पे फेड की यूटिलिटी के साथ रिकॉन के साथ इन्फॉर्मेशन जरूर निकाल लेंगे। डेविक ने एक प्लेयर को स्पॉट किया बट वो स्मोक में ही गुम हो गए। इनफैक्ट दूसरी तरफ से बाहर निकल के किल निकालेंगे यूबी यहाँ पे और ट्रेड भी हो जाएंगे। डेविक फॉरवर्ड है यहाँ पे, लास्ट प्लेयर का वेट कर रहे हैं और हेडशॉट देके
उनको भी टेक डाउन करेंगे. दैट इज गोइंग टू बी शैलन फ्रॉम द साइड ऑफ टीम इटर्नस. देखते ही देखते स्टार्टिंग से ही एक फास्ट मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे. इथेरियस 2-0 का स्कोर लाइन, और अब बाय राउंड नजर आएगा हमको टीम इटर्नस के पास. Yes, absolutely. But देखा जाए तो considering every map जितना भी अब तक हुआ है, Team Eternal shows their comeback and their main strength after gathering the ARs, जितने भी assault rifles है. So that should be a huge advantage for them because now they are Team TM is playing on save round. So let's see how it goes with them. Now Mighty Eternus, knowing that it is already on B side, he's using his paint shell here. Meanwhile, Midas is ensuring that the side is clear, the main is clear here. They are focusing upon yellow. On the other hand, we get to see DT Eternus waiting for Abe. Oh my god, he somehow survives here. And let's see how it will go. Abe takes someone, but on the other hand, Blackstar, knowing that the wall was a bit off the side. But now again, they are just taking the frags one after another. So what do you think about it? यहाँ पे 3v3 सिचुएशन हो चुका है. इथेरियस DT इटर्नस से एक और किल निकालते हुए आइस कोल्ड के ऊपर ब्लैक स्टार के ऊपर स्पैम पड़ेगा. वार्डन को टेक डाउन करेंगे और इसी के साथ किलो आप बचते हैं. आखिरी प्लेयर 1v3 सिचुएशन के साथ 8 बुलेट्स अवेलेबल है हेड हंटर में, बट उनका ही हेड यहाँ पे एंड कर दिया जाएगा वॉइड के द्वारा. इसी के साथ पहला राउंड जीतते हुए. एंड मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ कि हमने इटर्नस को जब से खेलते हुए देखा है वो कमबैक्स कर रहे हैं. कहीं ना कहीं जितने भी राउंड्स वो लूज करते हैं उन्हीं राउंड्स को वो वापस लेकर आते हैं. तो यहाँ पे भी हमको सिमिलर गेम प्ले अनफोल्ड होता हुआ दिखेगा उनकी तरफ से. एज ऑलरेडी एक राउंड वो ले चुके हैं काफी बढ़िया लीड के साथ. एंड बाय लीड आई मीन उनके 3 प्लेयर्स जिंदा थे. इट वाजंट अ क्लोज राउंड एट ऑल. तो बस अब यहाँ पे देखना ये है कि ये जो अब बाय राउंड हमको देखने को मिल रहा है अब अटैकिंग टीम की तरफ से, दैट इज टीम TM, उसका काउंटर कैसे करते हैं. ऑल द प्लेयर to be pushing towards the B side. एक प्लेयर जो है वो मिड लग करें, that is going to be the chamber, the sentinel. डेविक यहाँ पे पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ फॉरवर्ड जा रहे हैं. एंड सेटअप्स की तरफ देखिए, सारे के सारे प्लेयर डिफेंडिंग टीम की तरफ से, इटर्नस की तरफ से फॉल बैक कर चुके हैं. दे वांट टू प्ले इट स्लो, दे वांट टू प्ले इट विद द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन. रेस भी उनके आ चुके हैं. नेड यहाँ पे डाल दिया जाएगा प्लांट के टाइम पे. स्मोक्स भी दिए जा रहे हैं. फ्लैशेस यहाँ पे दिया गया है. वॉइड वाचिंग दैट मिड एंगल और यहाँ पे हेडशॉट कनेक्ट करेंगे. मीनवाइल डेविक टेकिंग द चैम्बर आउट, और वॉइड यहाँ पे और शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे. बहुत ज्यादा लो स्पीड को डाल के पीछे भेज दिया जाएगा. इटर्नस कनेक्टिंग अ ब्यूटीफुल हेडशॉट, माफ कीजिएगा, DT कनेक्टिंग अ ब्यूटीफुल हेडशॉट राइट ऑन टू ब्लैक स्टार. उसी के साथ इट्स अ 4v3 सिचुएशन. वॉइड ट्राइंग टू गेट वन मोर फ्रैग. ही वेल इसी के साथ सिर्फ 20 HP पे बचे हैं, बट 2v4 सिचुएशन अपनी टीम के फेवर में कन्वर्ट कर चुके हैं. आइस कोल्ड सामने से स्विंग करेंगे, एक फ्रैग निकाल लेंगे और इसी के साथ जो स्पाइक है वो डिफ्यूज किया जा रहा है. DT आइस कोल्ड को ट्रेड ऑफ कर लेंगे. माइटी गोइंग फॉरवर्ड, नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर हिम. डेविक विल टेक हिम डाउन, लेकिन यहाँ पे DT स्टिक कर रहे हैं और स्टिक करके डेविक के ऊपर किल भी निकाल देंगे. बोथ द प्लेयर्स गॉट 3k, बट इटर्नस गॉट द राउंड हियर. DT गॉट द बेटर ऑफ हिम. और इसी के साथ जिस चीज की हम बात कर रहे थे इथेरियस कि वो जो लीड ये छोड़ देते हैं उसको उसी टाइम कवर अप करने में माहिर है, जैसा कि हम इनको देख रहे हैं. उसी के साथ 2-on-2 का स्कोर लाइन हो चुका है और अब एक इको राउंड पे फोर्स किया जाएगा अटैकिंग टीम को. तो यस, यहाँ पे एक राउंड की लीड आई थिंक वेपन के एडवांटेज के साथ ले जा सकते हैं इथेरियस. Yes, absolutely. Like आपने जैसे बताया कि they might be using on the pistol rounds or the save rounds, but then they make sure that they make a cover up of it, and that is something which defines the team leader. On the other hand, we get to see that now Team TM is on. Oh my God, Team TM is on a saving round, but Kilo coming with that shot. That is indeed precise. Now we get to see that Team TM is being very careful about holding the angles, clearing the side. But on the other hand, Team Void is taking advantage of the smokes itself and pushing here. Now we get to see David coming with the Blade Storm and David making use of it. Let's see how it will go. David somehow saves himself and so does Void. Now let's see how it will go for David. David goes down here. On the other hand, we can see a 3v2 situation. Now it's a 2v2 situation and perhaps 4v2 situation.
Team Eternus is making sure that they do not get a single opening here, which they have been emphasizing upon from the very first map Last itself. player standing. And on the other hand, we also get to see that both teams, especially Team TM, focuses a lot upon controlling the mid. But here, this time, Team Eternus, knowing that they will try to do the same thing, they are focusing a lot on that place as well. They are making sure that it does not go out of control. So what do you think about that? Well, indeed they are in fact playing it quite to the perfection. लेकिन उसके साथ अगर मैं एक और चीज़ ऐड करूं इस कॉन्वर्सेशन में तो दैट इज माइटी उनका मोमेंटम इस एजेंट के ऊपर काफ़ी डाउन लग रहा है. दैट इज रेस. आई थिंक ही वांट्स टू गेट दोज अर्ली फ्रैग्स, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो ओपनिंग नहीं मिल रही है. आई थिंक यहाँ पे बेटर यही होगा कि वो फेड एक इनिशिएटर के साथ जाके फॉरवर्ड फ्रैग्स निकालने की कोशिश करें ताकि उनका एम पे थोड़ा मोमेंटम आए. एंड अभी भी उनके पोजीशन देख सकते हैं, ए साइड की तरफ सारा एक्शन अनफोल्ड हो रहा है, वो बी साइड पे मौजूद हैं. हालांकि उनकी जो टीम है वो रोटेट कर चुकी है, 3 प्लेयर्स ऑलरेडी खेल रहे हैं, बट डेविक एक को ऑलरेडी टेक डाउन करेंगे. दैट इज गोइंग टू बी डीटी वॉइड. यहाँ पे स्लो ऑप्स के साथ उनको स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी टीम साइड आ चुकी है, पूरा कंट्रोल ले चुके हैं. अच्छा यहाँ पे रिकॉन जरूर डाला गया. डेविक कमिंग फॉरवर्ड विल गेट द किल. यूबी विल ट्रेड हिम डाउन, लेकिन ऑलरेडी 2 प्लेयर्स को निकाल चुके हैं, तो मैन एडवांटेज यहाँ पे रिटेन करेंगे अटैकिंग साइड के प्लेयर्स. और अब माइटी आ रहे हैं रोटेशन पे, नेड अपना खोलेंगे. वहां पे जरूर चेंबर मौजूद है, बट ही कैन इजीली टेलीपोर्ट अवे फ्रॉम द सिचुएशन, बट ही वोंट बी एबल टू, एज यूबी विल टेक हिम डाउन. माइटी वंस अगेन विद द रॉन्ग क्रॉसहेयर placement will get taken down by Ice Cold. Shalon getting a trade onto Ice Cold, लेकिन एक 1v2 सिचुएशन में बचे हैं, अभी भी छुपे हुए हैं. रिकॉन से इन्फो नहीं दे रहे हैं, लेकिन टाइम जो है वो निकलता जा रहा है. वॉल इसी के साथ ब्रेक डाउन हो जाएगी. सेज की दोनों ही प्लेयर्स एक क्रॉस फायर में बैठे हैं. हाफ डिफ्यूज करने की कोशिश रहेगी, हेडशॉट कनेक्ट किया, लेकिन Suicidal Midas will get the trade and he will ensure that the team is on track with a scoreline of 3-3. Yes, indeed, and like we have said before, this semi-final match is so interesting because it's head-to-head, and not just for this map, but every map possible. Like talking about David going with his aggressive rounds, Killua coming with all the flanks, and talking about DT Eternus going with the same. This map will define what it takes for both the team to go to the final. You want to play? Now, Let's on the other hand, we play. get to see David trying to hold the side in a early. He's trying to ensure that he gets good speed here. On the other hand, DT Eternus trying to hold a particular angle, but now coming with Sova's ult, and Sova's ult gets DT Eternus and he punishes him. On the other hand, we get to see the ult from none other than Fate. And let's not forget that Fate's ult is very much powerful. इंडीड यहाँ पे उन्होंने होल्ड भी कर लिया था किल हुआ, लेकिन यहाँ पे शॉट्स मिस करते थोड़ा सा नजर आएंगे. शॉट्स क्रूशियल हो सकते हैं, बट आइस कोल्ड विल कवर इन अप, टेकिंग अ फ्रैग राइट ऑन टू शैलॉन्स हेड. किल हुआ फाइनली रिडीमिंग हिमसेल्फ by taking down UB Mighty, who is not having a good game here. Finally gets a headshot right onto the head of Ice Cold. Killua भी उनके आगे यहाँ सैचल करेंगे, but Killua will instantly take him down. And Team TM finally getting back into the lead with 1 round. 4-3 का स्कोर लाइन यहाँ पे हो चुका है. एंड जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो साइट में घुस रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस बहुत ही कमाल का बिल्डअप हो रखा है. और वो इसलिए भी हो रखा है कि स्टार्टिंग में ही एक फ्रैग कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है. यहाँ पे हमने देखा 2 लगातार राउंड डीटी जो हैं वो टेक डाउन कर दिए गए, पहले एम फाइट पे एंड देन सोवा के अल्ट के, दैट इज हंटर्स फ्यूरी. तो उन चीज़ों का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा टीम इटर्नस को. लेकिन बात करें अगर दूसरी तरफ टीम टीएम की, तो आई थिंक दे आर डूइंग अ प्रिटी गुड जॉब कोऑर्डिनेटिंग देयर यूटिलिटीज एंड देयर एंट्रीज. बट माइटी यहाँ पे इस बार मौजूद है अपनी मार्शल के साथ. लेट्स यहाँ पे कुछ कमाल दिखा पाते हैं नहीं. उनकी पोजीशन रिवील हो चुकी है. नेड यहाँ पर यूज़ करेंगे प्लेयर्स पे डैमेज डालने के लिए. डीटी विल टेक डाउन डेविक. फाइनली यहाँ पे मैन एडवांटेज स्टार्टिंग से जाता हुआ टीम इटर्नस की तरफ, और अब सारे के सारे प्लेयर्स थोड़े से स्लो डाउन होते हुए नजर आएंगे. टीम के
की तरफ से DT गेटिंग अनदर फ्रैग राइट ऑन टू किलुआ, बट साथ में ही उनके ऊपर एक रेजरेक्शन आता हुआ नजर आएगा एंड DT विल टेक डाउन सुसाइडल मिडास एज वेल। सामने से फॉरवर्ड आ रहे थे कवर देने के लिए अपने टीममेट को, बट खुद की जान गवा बैठे वहां पे। 3v5 सिचुएशन है, अभी भी कुछ ना कुछ गेम प्ले अनफोल्ड कर सकते हैं। स्पीड साइट इज प्रीटी मच एम्प्टी, बट it is always available. Mighty not having a really good day, but DT covering it up, taking the trade right onto Black Star। इसी के साथ 4 headshots, well not 4 headshot but 4 kills जरूर कंफर्म कर चुके हैं। Since यहाँ पे एक resurrection आया तो he might just go for a 6 kill ace। Killua coming forward, but DT is right there. I think he spotted a player. Oh, maybe he did not. Killua lurk in कर चुके हैं। DT is the only player defending this site from the box. He will connect a beautiful headshot right onto Ice Cold. He has the 5 kill ace. Will he go for the 6? No, he won't. Killua What the lurk कर fuck चुके was थे। that actually? एक down करेंगे। Indeed, that was a beautiful shot. But Shalon will take Killua down। Chamber Day Fantasy के साथ राउंड जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। But DT, oh my god, those headshots, especially the last one, just oh my god. Indeed. And the way DD Eternus was playing, like as controller, he's always on perfection. Like I was having doubts, like why Omen, why not Viper? Because he was playing Viper amazing in the previous map. But here we get to see that even towards Omen, he's playing aggressive as well as playing according to the map style. Like he can be aggressive at the same time he can go very progressive, waiting for them to come into the site and then trading it off along with his teammates. So now let's see. As we can see that Team TM has sheriffs and guns here, but now they're trying to ensure that they get the best out of it. Now David having his ult activated, he knows that most of the team members would try to focus. Oh my god, they will try to focus upon the mid and the B, so now they are rotating instantly. On the other hand, oh, he gets caught. Oh, Killua taking it away. Davik and the entire team being very careful here. They know that they don't have much to lose here except for a round in case if they do, but nah, they are playing it very precisely. Now holding the spawn and again going back to B. This is very different for them. Davik knowing that there might be someone at B. Oh, but Davik gets down. Killua trading it off. Now they are focusing on a plant. And on the other hand, Sova goes back with gathering information. A 2v4 situation, Killua taking a bit of hit, looking for flanks. On the other hand, we have Void Eternus waiting there, and UB who is already very low. Last player standing. Now, Killua is on kill break. Oh my god, what a round for Team TM. They have traded off. They are in an advantage. Indeed, and यहाँ पे एक thrifty round हमको देखने को मिला। इथीरियस बहुत ही कमाल का वहाँ पे फर्स्ट हेडशॉट कनेक्ट किया मिड की तरफ से, और उसके बाद किलुआ ने लगातार शॉट्स कनेक्ट किए। डीटी वहाँ पे जो अल्ट करके आए एंड देन हेडशॉट खाए उन्होंने। दैट वाज वेल अ बिट कह सकते हैं हिलेरियस फॉर मी, बट देन अगेन किलुआ's मोमेंटम फॉर दिस राउंड वाज प्रीटी हाई। हम देख सकते हैं उसी मोमेंटम को यहाँ फॉलो अप करके मिड हिट करने की कोशिश की जा सकती है। नन ऑफ द प्लेयर्स आर वाचिंग मिड फ्रॉम द डिफेंडिंग टीम। डेविक टेकिंग दोस फॉरवर्ड एंगल्स राइट ऑन टू द कंटेनर्स, बट वॉइड इज पुशिंग इन। ही इज नॉट यूजिंग हिज बॉल। क्या उनको एक्सपेक्ट किया जाएगा यहाँ पे? जी नहीं, 2 किल निकाल चुके हैं और ट्रेड हो जाएंगे, बट अपनी टीम को मैन एडवांटेज दिलाने के बाद एज ही विल टेक डाउन द स्टेज एज वेल, सो देयर इज नो रेजरेक्शन अवेलेबल whatsoever। और उसके साथ हम देख सकते हैं ए से पुश हो रहा है, बट डेविक विद द ब्यूटीफुल हेडशॉट राइट ऑन टू माइटी। किलुआ गेटिंग अ किल ऑन डीटी एज वेल। फेड यहाँ पे जो फॉरवर्ड आए थे उनका भी फुटस्टेप आई थिंक जा चुका है, एंड कोई वेपन भी अवेलेबल नहीं है। शैलोन मीनवाइल डेविक को जरूर टेक डाउन करेंगे, और इसी के साथ लास्ट को भी इन्होंने निकाल दिया है। लास्ट प्लेयर का इन्फो उनके पास ऑलरेडी है कि वो मिड की तरफ थे, एज फेड ने उनका साउंड सुना था, बट यहाँ पे उनका साउंड फिर से सुन लिया गया है। बट किलुआ is on a pretty low HP. Forward का recon डाला है, but he is going to come and UB will take him down. Okay, that was some round. I think यहाँ पे अगर UB
पक्का किल निकाल लिया जाता तो लास्ट प्लेयर भी लो थे, कुछ भी हो सकता था, बट देन अगेन इट्स द सेमीफाइनल्स एंड वी आर एक्सपेक्टिंग and we are getting what we are expecting, माफ कीजिएगा, because it's a 5-5 scoreline and it is a head-to-head game, Ethereus. So, do you think this one's gonna go to overtime? I think it I really do hope so. but here's the most interesting part. Like, even though whenever they have full buy and all, yet most of the team they end up losing the round. On the other hand, whenever they are in the save round, they are like winning it all. So that's the irony, I think. But again, you may never know how good they are. Indeed, but यहाँ पे अगर हम राउंड की बात करें, Mighty going Oh my God. down by Kilwa, he is just not having a good day and not a good map actually. Absolutely. GT को भी black star take down करेंगे, UB किल निकालेंगे आइस कोल्ड के ऊपर. Devik once again going forward with the 2K Shalon in a 1v3 situation, taking down Devik, but that is not going to be enough as Suicidal Midas will take him down and will get one round lead once again. Rounds are being traded right here. Ethereus and Kai, और यहाँ पे अब फाइनल राउंड आ चुका है इस मैप का. एंड जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे थ्रिफ्टी राउंड्स भी हमको निकलते हुए दिखते हैं, इको राउंड्स भी निकलते हुए दिखते हैं. दैट्स प्रोबब्ली बिकॉज यू नो व्हेन इट कम्स टू such rounds, so players are mostly concentrating on their aim because they don't have anything else. They don't have the utilities, they don't have the map control or any kind of thing. So you know, they just concentrate on their utilities and get better with their aim for those specific rounds. यहाँ पे भी हमको एक similar चीज देखने को मिल सकती है. यहाँ पे गार्डियन, शॉटगन, वेंडल, पिस्टल और DT के पास एक स्पेक्टर है जिससे कि वो क्लोज एंगल्स खेल रहे हैं. यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं एज रिकॉन भी हो रहे हैं. वो भाग के फॉरवर्ड जा रहे हैं और डेविक उसी टाइम उनको शट डाउन कर देंगे. इसी के साथ वॉइड एक ट्रेड ले लेंगे. वेल काइंड ऑफ अ ट्रेड ऑन टू किलवा. यू भी परफॉर्मिंग विद द गार्डियन, बट आइस कोल्ड और ब्लैक स्टार भी अपने शॉट्स मिस नहीं करेंगे. शैलोन इज रेडी विद द टोर्ड फोर्स दैट इज गोइंग टू बी द ऑपरेटर. दैट इज अ big crosshair for the scope. Oh my god, Ice Cold will get caught off guard and last second में यहाँ पे वहाँ पे बॉल हुआ. ब्लैक स्टार प्लांट करके वर्ड के ऊपर किल निकालेंगे. इसी के साथ वेट के अल्टीमेट के साथ इंफॉर्मेशन आ जाएगा. आई थिंक यहाँ पे जो सोवा है दैट इज गोइंग टू बी सुसाइडल, वो नहीं अफेक्ट हुए हैं अल्टीमेट के साथ और रिकॉन डाल के प्लेयर्स का इंफॉर्मेशन भी निकाल लेंगे. दे नो शैरोन इज क्लोज, दे नो एक प्लेयर पीछे हैं, बट जो प्लांट है उसका टाइम जो है वो टिक होता हुआ नजर आ रहा है हमको. एक फेक डिफ्यूज दिया जाएगा और यूनियन को टिक करेंगे, बट ब्लैक स्टार कमिंग फॉरवर्ड इन अ 1v2 एंड ही विल गेट बेटर ऑफ इट. इसी के साथ 2 राउंड्स के लीड के साथ हाफ सिक्योर करेंगे और अपनी टीम का मोमेंटम अपने गेम प्ले के साथ हाई रखेंगे. Yes, absolutely. And देखा जाए तो like the way Black Star is playing with Sage, it's amazing. Like, to be honest, he knew that he will be targeted because he has the resurrection ready, and that can bring them a one-man advantage. But on the other hand, he knew how to use it precisely, like waiting for the enemies to come near him, knowing that they will try to get the kill. And then when he knows that it is time to get when he know that it is time to get the kill, he went there straight ahead, and that is what defines Black Star. Indeed, बिल्कुल सही बोला आपने. एंड यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली अभी राउंड की फिलहाल बात करना चाहूंगा, एज यहाँ पे जो एक्शन है सेकेंड हाफ का अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा. एंड द फाइनल हाफ ऑफ दिस, ओह माय गॉड, व्हाट सुसाइडल एंड डेविक, दे आर जस्ट deleting their opponents right there and there. Devik getting another kill right onto DT. He is on fire. यहाँ पे उनके सामने एक और मौजूद है. That is going to be UB getting down. Void is the last player standing and Devik is hungry. He is just coming forward. लेकिन यहाँ पे Ice Cold मौजूद है जो कि उनके ऊपर किल निकाल लेंगे. और इसी के साथ यहाँ पे पिस्टल राउंड भी जीत चुके हैं. 8-5 का स्कोर लाइन. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीड लेने की कोशिश करेंगे टीम TM के प्लेयर्स. जिस तरीके से वहाँ पे सुसाइडल और डेविक ने अपने हेडशॉट्स कनेक्ट किए, वेल दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग एथेरियस. Yes, absolutely. और देखा जाए तो TM ने ये बात like easily realize कर ली है कि as
soon as they win the map, it is better for them. So they are trying to make sure that they don't get enough economy for the next round or so. But at the same time, we get to see that they are saving it entirely, so they don't have much to lose. So let's see how it goes. Blackstar has already taken on DT Eternus, who was trying to focus upon getting a flag. And now Davik ready with his dash. Oh, he somehow still himself, but Mighty takes him down. And now my god, Mighty coming with that headshot. But with 1 HP, it is very much unaware क्या होने वाला है. Yes, but I think he can get a heal pretty easily as the Sage is still alive. And यहाँ पे मैं बात करूँ बाकी के players की, तो यहाँ पे शारोन टेक डाउन करेंगे केलोआ को, और इसी के साथ ब्लैक स्टार भी फॉरवर्ड आते हुए नजर आएंगे. हाई स्कूल के साथ दोनों प्लेयर्स एक किल निकालते हुए ब्लैक स्टार तीसरा किल निकाल के फॉरवर्ड जाएंगे लास्ट प्लेयर की तरफ. और यहाँ पे वॉइड जो है कंप्लीटली फंसे हुए हैं. क्या यहाँ पे वो फाइनली क्लच कर पाएंगे? दोनों ही प्लेयर्स उनको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे एक किल निकाल चुके हैं एंड ही ओवरकमिट्स इट. और इसी के साथ Black Star getting the 4K and saving the round for his team after such a beautiful entry by Mighty. लेकिन यहाँ पे Black Star पूरे तरीके से राउंड को बचाते हुए नजर आएंगे. Yes, indeed. But देखा जाए तो it has affected the economy a lot, and that might bring a disadvantage for them in the next round. But ये देखना पड़ेगा कि कैसे ये लोग utilize करते हैं अपने weapons को. So let's see how they will focus upon. Now they have realized that the Eternus will also focus upon mid. So I'm pretty sure they will try to secure it even better. And with Chamber, it is very much possible. Also, they have Sage, which is whose utilities could be used for further damages. So let's see how it goes. We get to see the team trying to focus upon A side, where Davik is holding it up very precisely, and UB is trying to make a contact. Oh, and he has made impact, but on the other hand, we get to see Raze getting it all into action. All of them are focusing upon it, and both the teams are now near A side, and Team Eternus has entered the site trying to get a plant. Oh, but he goes down. CS Suicidal is absolutely playing it like he's definitely getting all the skills he needs, and Davik takes him down. Now it's Shell on Eternus, and oh my god, defenders have won another round. Like Team TM has won another round. It was more like a save round for them, to be honest, but they are in an advantage. So what do you think about it, AK? Well, indeed, they are absolutely destroying Eternus right now. Team TM having a bonus round, still getting those frags. Suicidal Midas, you know, those 2K, that just pretty much brought the round in. And there was a bit some off coordination with the Sage wall. उन्होंने अपनी player को, you know, ऊपर चढ़ा दिया, उनका aim खराब कर दिया. तो यहाँ पे थोड़ी सी गलतियां हमको इटर्नस की तरफ से भी देखने को मिली, बट उनका एक बाय राउंड था. वेल, एक और बाय राउंड उनके पास जरूर अवेलेबल है, लेकिन 5 राउंड्स की लीड यहाँ पे लूज कर चुके हैं. और बात करूं अगर मैं लूज करने की, तो शायद हमने यहाँ पे अपना एक प्लेयर लूज कर दिया. दैट इज गोइंग टू बी सुजाइडल मिदास हिमसेल्फ, जिसकी अभी तारीफ चल रही थी. तो यस, थोड़ी देर में वो आई थिंक रिकनेक्ट करेंगे. एज वी कैन सी ऑन द सर्वर, ही इज डिनोटेड एज डिसकनेक्टेड ऑन हिज पिंग स्टैट्स. तो थोड़ी देर में प्लेयर वापस आएंगे. लेकिन बात करें अगर हम बाकी के जो राउंड्स निकले यहाँ पे, जो स्पेशली जो 5 लगातार राउंड्स हमको देखने को मिले हैं, जो कि सिर्फ एक ही टीम के फेवर में गए हैं. इनफैक्ट लेट्स नॉट टॉक अबाउट द लास्ट 5 राउंड, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 3 राउंड्स ऑफ दिस हाफ. पिस्टल राउंड से इन्होंने मोमेंटम हाई रखा गया डिफेंडिंग टीम की तरफ से. फॉरवर्ड एंगल चैलेंज किया उन्होंने, फॉरवर्ड पीक्स ली, समथिंग टीम इटर्नस वाज नॉट एबल टू डू. स्टार्टिंग से ही यहाँ पे हमने देखा डेविक और सुसाइडल मिदास बार बार सामने के एंगल्स खेल रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ. दे नो कि हमारे क्रॉस एयर में अगर कोई भी प्लेयर आएगा तो उनको टेक डाउन वो कर देंगे बहुत ही ज़्यादा आराम से, और उसी कॉन्फिडेंस का फ़ायदा उठा के अपनी टीम के लिए स्पेस क्रिएट कर पा रहे हैं, किल्स निकाल पा रहे हैं. सेकेंड राउंड was a bit off for everyone, but Black Star shining with that 4K, coming right at the best moment to save their team. और इस राउंड की तो क्या ही बात करें, वहाँ पे सुसाइडल मिदास के 2 बहुत ही कमाल के फ्रैग्स आते हुए, उसके साथ बाकी टीम इनको फॉलो अप करते हुए. डेविक ने भी एक किल निकाला पिस्टल से, एंड देन ब्लैक स्टार ने लास्ट किल कंफर्म किया. तो यस, इस टाइम पे मोमेंटम तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई है टीम टीएम का. बाइस भी अवेलेबल हैं, एंड केलुआ के पास एक ऑपरेटर भी ऑनलाइन है.
और इसी के साथ जो मैच है वो कुछ ही सेकंड्स में अनपॉज होकर शुरू हो जाएगा, इनफैक्ट हो चुका है। तो लेट्स सी ये राउंड किस तरीके से जाता है इथेरियस। Yes, absolutely, and we get to see certain messages coming here and there from both the sides, taking about breaks. So let's see how this round will go. We already get to see one frag, like the race going down and down upon mid, but DD Eternus taking down Davik. It might be a huge advantage for them, knowing that Davik is the one who has been holding it off for a very long time, and now Suicidal Midas, whom we talked about, is entirely upon it. But now he gets caught here, and now DD Eternus taking him down. DD Eternus was in a move, but now he gets taken down, and we also get to see none other than Killua taking Void Eternus down. Now it's 1v3 situation. What do you think about it? Will he be able to capitalize it, or will it again go for Team TM? When he is trying his level best, he has the utilities available, but he is left on bench to HP. 14 HP only, and Black Star will come forward. Will easily connect some simple body shots and will take him down. And we have the answer. It's the round is going towards Team TM right now. Yes, indeed. And then we again get to see T-Bag here coming from TM. I mean, like, all for the sake of fun? Yes, absolutely. Why not? I mean, Dapper OP here. We get to see some Dapper movement. Indeed, but well, not so much fun for the attacking team right now. That is going to be Team Eternus, because rounds हार रहे हैं, and now I am questioning the pick of Mighty. यहाँ पे I think एक जेट को ला सकते थे Mighty। अगर सेज खेलते Void फिर से जेट पे हमको दिखते तो शायद गेम थोड़ा अलग जा सकता था, बिकॉज दैट्स व्हाई आई सेड, क्योंकि रेस बहुत ही ट्रिकी एजेंट है इस मैप पे। उससे स्पेस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड स्पेस की बात करें तो किलवा ने पूरे तरीके से स्पेस जो है अपने ऑपरेटर के एंगल में ली हुई है। इसके साथ एक किल भी निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ब्लैक स्टार उनके साथ मौजूद हैं साइड को डिफेंड करते हुए। माइटी गोइंग फॉरवर्ड, और इसी के साथ क्या किलवा के ऊपर फ्रैग निकाल पाएंगे? जी नहीं, ओह माय गॉड, करेंगे ब्लैक स्टार मिल वाले किल निकालते हुए। डीटी 2 किल निकाल जरूर चुके हैं, ट्रेड्स वापस लेते हुए बहुत ज्यादा कम एचपी में बचे हैं, लेकिन आइस कोल्ड यहाँ ऊपर मौजूद हैं। अपना अल्ट ऑर्बिटल स्ट्राइक पॉप करेंगे और पेड़ को पीछे जाने के लिए मजबूर करेंगे, जहां पे ऑलरेडी जो जेट हैं वो आके स्पेस बना चुके हैं। दैट इज गोइंग टू बी डेविक टेकिंग डाउन टीटी एंड will get taken down, in fact traded by UB। आइस कोल्ड यहाँ पे किल निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनको हाफ एचपी पे छोड़ेंगे। आखिरी प्लेयर बचे हैं सुसाइडल मिदास यहाँ पे टीम टीएम की तरफ से, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोटेट कर रहे होंगे ओपोनेंट, बिल्कुल सही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन द टाइमिंग, आई थिंक ही merely just spots him, or maybe he did not well, the time will tell, because यहाँ पे प्लांट जो है वो इस साइड पे दे दिया जाएगा। He was waiting at, he's still waiting at B, whereas it has 30 gotten seconds his A. And then now since he is realizing Face he's your going fear! for it. But the ult has been wasted here on the other hand, because he was considering Sova to be there already. And let's see how it will go. Again, we get to see initiator diff here. Let's see who will win. Indeed, but that ult is not a waste. It's actually an investment to get the information, जिसकी वजह से वो reposition कर पाए हैं काफ़ी अच्छी पोजीशन के अंदर। एंड सोवा इज कमिंग इन। यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है। यूवी के पास अपना रिकॉन अवेलेबल है, उस रिकॉन के बेस पे आराम से स्पैम कर सकते हैं, नीचे कूदेंगे, ट्रॉलर यूज करेंगे, पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टाइम का पूरी तरीके से फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे सुसाइडल ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन द प्लांट, ही विल गेट इट हाफ, बट यूवी विल गेट द क्लच। इसी के साथ एक 1v3 क्लच करते हुए अपनी टीम के लिए, एंड दे आर making a statement that Team Eternus is still in the game, Ethereus. Yes, absolutely. Like all these rounds that they have been losing, they had to make a statement. And I think this was the round for them. And through this round, I think they will try to capitalize the rest of the rounds. Let's see how it goes. Like, honestly speaking, we are all still expecting for overtime. And if that happens, it would be amazing. So what do you think about it, people? Do you think we will come to an over... do you think we will come to some extra rounds here? Drop your comments below. Well, indeed, do tell us in the chat what you guys think. लेकिन यहाँ पे honestly what I think is that Davik is going to wreak havoc
राइट ऑन टीम इटर्नस। यहाँ पे काफी बढ़िया सडन मूवमेंट, बट डेविड का my उससे ज्यादा God, बढ़िया he was एम, waiting for it. पूरे तरीके से ट्रैक किया उनको और उनके ऊपर किल निकाला। Shalon trying to get one kill, he will in fact right onto the Sova play that is going to be Midas, suicidal Midas, और इसके साथ थोड़ा और स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट डेविड देखिए अभी भी वो फॉरवर्ड एंगल खेल रहे हैं और दूसरी तरफ किलुआ हीटो के साथ अपना एंगल लगा के बैठे हैं। फॉरवर्ड भी ले जाएंगे, एक और प्लेयर को टेक डाउन करेंगे, तीसरे को भी निकाल देंगे। इसी के साथ मैच पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए टीम टीएम दोनों ऑफर्स यहाँ पे कमाल दिखाते हुए 5 kills, 5 with the operators. Well, one is of the ultimate, but still an operator is an operator. और उसका बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे यूज दिखाया किलुआ ने। Yes, indeed, and एक से भले दो, like they say, and Kilo and Givik coming together as Chamber and Jet, who have been considered precisely equal. It is indeed hard to track them down. So let's see how they will take it, because it's already they are already going with a save round on the final round. So let's see how it goes. But oh my God, Void Eternus has already taken down Devik, who was on an operator, and he has a resurrection ready as well. Fire in the hole! Now DT Eternus gathering information and waiting silently. I'm pretty sure he has given UB some information about it, and UB takes down suicidal Midas already. Now Black. Oh, but they have the spike. They didn't set the spike. Spike's at spawn. They both the players. They have the spike, but I think. Oh, Yes. okay, the Omen takes it back. Oh my God. Now they have planted the spike. It's a 2v5 situation for Killua and Black Star. Well, one player is looking towards mid, but both of the players are coming towards main area. Void is ready with that operator. He's a jet player. He can surely show some skills of his operator aim. यहाँ पे flash के साथ players को थोड़ा सा पीछे रोक दिया जाएगा. Void connecting that shot onto Black Star. Killua trying to make a difference. यहाँ पे एक kill निकालेंगे, but UB will trade him down, and Team Eternus is still fighting, even though the opponent team is just one round away from winning this semi-final. Yes, indeed, and getting a 50 round here, it was unexpected, like honestly. But again, this is the beauty of Team Eternus. They go for the save rounds, and yet they capitalize it perfectly. And honestly, Team TM was thinking that they would try to come for the spike, but again, Omen, who had the ult, he had Their to use fears it perfectly. betrayed them. So we get to see a perfect combination why they chose Teleport's ready. Omen for this map, and this is the reason why. So I think it was a perfect decision for them. But now we get to see Take flight. both team, like especially Team Eternus focusing upon the mid again, Enemy- where we have Bring them down. where we already. Oh have- my God, DT. Yes, DT. Okay, he He's gets down 2. Teleport's gone. I think DT is already in a entirely in the form. So let's see how it will go for Team TM. Last player standing. DT takes down another one. Now it is only Killua. Spike planted. Mighty again getting hunted after those satchels. Killua is ready with the operator, but he misses that no scope. Killua Killua will get the takes- kill with Headhunter. Oh Connects my a third shot onto Void, and Whoa! he He will takes get him down. 4th kill. Indeed, and I think यहाँ पे DT को एक exploit मिल गया है टीम टीएम के सेटअप्स में। वहाँ पे बार बार पिछले राउंड में भी उन्होंने उसको यूज़ किया, उस ट्रैप के आगे टेलीपोर्ट करके। इस बार भी वो चेम्बर का जो ट्रैप लगा हुआ है उसको टेलीपोर्ट करके उससे आगे जाके वहाँ पे वो किल सिक्योर कर रहे हैं। इनफैक्ट 2 किल्स उन्होंने वहाँ पे सिक्योर किए। सोवा जो कि अपनी हंटर्स फ्री यूज़ कर रहे थे उनको ऑफ गार्ड कैच किया, एंड देन डेविक जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक प्लेयर फॉरवर्ड होगा, उनको भी उन्होंने काइंड ऑफ गार्ड कैच किया और 2 किल्स कंफर्म किए। बट देखना ये इस एक्सप्लॉइट को कब तक यूज़ कर पाते हैं या और यूज़ करेंगे भी या नहीं। As we can see, Mighty is going towards mid. So is Devik with the Blade Storm activated, and Mighty will get a beautiful headshot right onto his head. और इसी के साथ थोड़ा सा mid की तरफ स्पेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे गैदर करना, और इसी के साथ हम देख सकते हैं बाकी के बाकी प्लेयर ए साइड की तरफ जा रहे हैं। क्लोज एंगल्स को क्लियर ऑफ किया जाएगा। शैरो ने किल लेके पीछे की तरफ टेलीपोर्ट करेंगे ऑलमोस्ट एज द डैश ऑफ अ जेट, और डीटी फिर से उसी
ट्रैप को एक्सप्लॉइट करते हुए नजर आएंगे, किल निकालेंगे, बट सुसाइडल मिडास इज राइट बिलो हिम एंड यहाँ पे डीटी को उनको इन्फॉर्म मिल जाएगा, लेकिन वॉइड ही उनको पहले से ही टेक डाउन कर देंगे। इसी के साथ लास्ट प्लेयर बचे हैं किल अपनी टोर फोर्स के साथ, लेकिन इस बार ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जरूर एक वॉल थ्रू शॉट कनेक्ट किया शारन के ऊपर, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। इसी के साथ 9-12 का स्कोर लाइन हो चुका है। धीरे धीरे यहाँ पे वापस जरूर आ रहे हैं गेम में एंड नाउ इज द टाइम कि अब टीएम को थोड़ा सा देख के कदम रखने पड़ेंगे। दे जस्ट कांट इस मोमेंटम के साथ एंड इस जो यहाँ पे एक्सप्लॉइट्स मिल रखे हैं उसके साथ ऐसे ही वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। दे नीड सम इन्फो प्ले, दे नीड सम फॉरवर्ड फ्रैग्स राइट नाउ टू क्लोज दिस ऑफ, बट मीनवाइल टीम इटर्नल्स आर प्लेइंग इट टू द परफेक्शन। और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, दे आर बीइंग कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। एज वी कैन सी मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर टुवर्ड्स ए साइड एंड यहाँ पे बी साइड का बी साइड की तरफ गैदर हो रखे हैं टीम इटर्नल्स के प्लेयर्स। Yes, I indeed. think And we have now a we get to disconnection see- coming in. Yes, there's another disconnection. So for that reason, I also had to focus here. Yes, indeed, and we get to see this over getting disconnected again. Maybe he was facing certain issues in the map, because we get to see that he was lagging behind while spectating it. So maybe he will try to log in again. But on the other hand, what do you think of it? What do you think of the comeback coming from Team Eternals? Because I think they are doing a spectacular job, especially their home in DT Eternals. He has proven himself in all the maps, I must say. Indeed, I actually didn't want to use the term comeback. I didn't want to jinx it because the last 3 rounds have been absolutely delightfully serious and I surely don't want to jinx. And मैं चाहता हूँ कि yes कहीं ना कहीं final map है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा action देखने को मिले. But then again, let's hope we didn't jinx it and let's see यहाँ पे Eternals शायद all rounds निकाल पाए. लेकिन टीम TM भी ready रहेंगे इस बार because ट्रैप जो है इस बार आप देख सकते हैं उन्होंने थोड़ा सा पीछे लगा दिया है जिसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे बार बार टुवर्ड्स द किचन एरिया, द चैम्बर ट्रैप उसको पीछे लगा दिया ताकि इस बार अगर कोई भी प्लेयर आए उनको एट लीस्ट वहां से फॉरवर्ड जाने के लिए वो ट्रैप जो है वो तोड़ना पड़े अंटिल द प्लेयर इज जेट जो कि उसको स्मोक ऑफ कर सकते हैं, बट देयर इज नो जेट अवेलेबल फॉर टीम इटर्नल्स एज दे हैव माइटी प्लेइंग दैट रेस एजेंट। और यहाँ पे हम एक बार फिर देख सकते हैं बी साइड की तरफ इस बार 2 प्लेयर्स फॉरवर्ड जाके खेलेंगे एंड यहाँ पे थोड़े से बैंटर्स आते हुए चैट के अंदर और लगता है थोड़ा सा टाइम हमको लगेगा ये गेम को कंटिन्यू करने में एज वन प्लेयर इज नॉट कनेक्टिंग और मे बी वील हैव टू गो फॉर ए 4v5 डिपेंडिंग ऑन द रूल्स एंड द टाइम्स दे हैव लेफ्ट। Yes, indeed. I think if it goes for a very long time, then I think it will go with a 4v5 player. But yes, indeed, they can also take a technical pause. They have the advantage of taking a technical pause, which would provide them another minute. But yet they are not taking. They are asking for pause from the admins itself. But let's see. Focusing upon suicidal Midas, he is very much crucial to the team, and I think for that reason they are vouching for it. On the other hand, what we get to see is that they are putting the same traps. Like we're talking about Team TM, they're putting the same traps, putting the same lineups every time. So that brings them to a disadvantageous position because Team Eternus have already read them pretty well, and they are already prepared to do the best to counter them. So let's see how it goes. And we get to see the employee of the month. Congratulations, Paul. But talking about it, what do you think of it? Like, since we already have some time, what do you think of the new lineup coming from Sentinels? When we talk about NA, it has been a sensation because Shroud came, then another player who used to play for version 1 came here instead of Gunpeki. So what do you think of the new lineup for Team Sentinels? Because for me, Sentinels is my favorite team. So what do you think of it, AK? I just have one line to say. Basically, the new lineup is basically XC9 players plus 1 player
4 XC9 players Absolutely, plus 1 player. absolutely. It is pretty much. Because I believe Shazam and Shroud have played together in CS when they were for Cloud9, Yes. and also Shroud was a Rockers. C9 sensation, in fact. Yeah. Shroud was a C9 sensation. He because of C9 and CS, he's considered the FPS god here. But at the same time, I think Rockers was also involved with C9 back then. Well, we are just going too much back into the past, and then again, you know, जो चीज़ है वो है there were 4 players. There are 4 XC9 players playing right now. So let's see. In fact, even I am interested to see what the Sentinel the lineup has to bring in for us. But यहाँ पे अभी वाले lineup जो हमारे सामने है उनकी बात करें तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा 4v5 जो है वो शुरू हो सकता है, but they still have some time remaining in the technical pauses and the time out. So let's see if it is actually going to be a 4v5, because if it is a 4v5, one crucial player will not be with Team TM, who are already losing who have already lost third consecutive rounds. Or yes, they are in fact starting. Oh, Suicidal Midas is back. I think the Sova Yes, from I think. Team TM I is think. back, but he's not still moving. Yes. So yes, I am asking them if they can start. Yes. Oh my God. Are we getting some fun? Oh, part Revealing from- hey, from he's the back. internet? Yep. Indeed, and now we can see a B take coming in right from the team of Team Eternals. All the 5 players यहाँ पे W गेमिंग करते हुए थोड़ा सा नजर आएंगे. फेड ने इन्फो निकाल जरूर लिया है एक प्लेयर का, बट किलुआ वहाँ पे कवर देते हुए एक प्लेयर को टेक डाउन करेंगे. चेम्बर डिव दिखाते हुए थोड़ा सा, और यहाँ पे हमको कंट्रोलर डिव भी देखने को मिलेगा, बट किलुआ गेटिंग द ट्रेड्स, इनफैक्ट गेटिंग द थर्ड फ्रैग राइट ऑन टू वॉइड, जिन्होंने अभी एक रिसरेक्शन दिया था. मैन एडवांटेज यहाँ पे बरकरार रखते हुए किलुआ अपनी टीम के लिए शायद थोड़ा सा गुस्से में आ चुके हैं आफ्टर ऑल द पॉजेस एंड एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन इन द चैट. उसका गुस्सा यहाँ पे अपने एम के साथ दिखाते हुए नजर आएंगे. और indeed, and Kilo बहुत बड़ी Kilo बात was है. 8 threats taken. I'm really sorry to cut this off, but I think Kilo's ace got taken away, and that's really sad here. But yes, like you say, Kilo is really angry, and so is Devik. I think Devik is waiting for them to make. Oh my God, Devik is trying to ensure that he gets to take the frags when they are running away. Oh, the trigger discipline, but he misses the aim. No. Oh no! He No, damn it, But yes, he has given enough damage to both the players. But considering that, yes, they have given enough damage already. So let's see how it will go now. Since they have already realized that they are going to B, so now they will try to capitalize it. 10 seconds left. Mighty is taking the forward angle control. He is getting the space. Suicidal will cross him, but he will get the headshot. Oh want my to God, the play? Phantom Let's minus play. 140, and Shalon is playing below the side. He is right under the sage. Will he expect him? Well, I don't think so. जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशनिंग बन रखी है, सीधा नीचे ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे उनके ऊपर किल निकाल लिया जाएगा. बट वॉल इज परफेक्ट. यहाँ पे थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा. हाफ डिफ्यूज ऑलरेडी हो चुका है. इज ही गोइंग टू स्टिक इट? ओह नो, ही वॉन्ट, एंड शैलोन विल टेक द पीक, और इसी के साथ एक क्लच करेंगे. 1v2 क्लच ऑन टू सुसाइडल मिदास एंड द सेज. दैट इज गोइंग टू बी ब्लैक स्टार, और इसी के साथ एक और राउंड कंफर्म करेंगे. वेल, किलुआ के इतने प्यारे 4 किल्स के बाद डेविक का एक ब्लंडर यहाँ पे राउंड हरवा देगा उनकी टीम को. एंड आई थिंक अब एक और लो इकोनॉमी राउंड हमको देखने को मिलेगा टीम टीएम की तरफ से. वेल यस, 2 प्लेयर्स जो हैं वो हाफ शील्ड्स में है, लेकिन बाकी प्लेयर्स के पास काफ़ी बढ़िया इकोनॉमी है जो सेटअप हो रखा है. सो लेट्स सी अब यहाँ पे किस तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज टीम इटर्नल्स इज फीलिंग इट राइट नाउ. Yes, indeed, and I think this round will determine a lot for both to play. But now we get straight coming one after another, and Devik, who was trying to go aggressive, gets taken down. So now it's a 3v4 situation, and they are already having a huge advantage. So let's see, Killua is waiting for them very patiently, and he knows that they are making a rotation. But now CS Suicidal Mirrors taking on DT Eternus, who has been very important. Both the threats have been taken down for both the teams. So now let's see how it goes. Mighty Eternus now trying to make a move towards mid, knowing that they will make a rotation as well.
and he is trying to make sure that the kitchen gets taken. The kitchen gets controlled entirely under planted. Eternus. Oh, what a timing! Oh my God! Ice Cold takes him down. Now it's 2v3. Now both of them do not have any ults ready, so it will be a huge advantage for Team TM. But they are holding it inside. Oh, but now it's a 2v2 situation. One enemy remaining. Last player standing. Oh my That God. was close. That was really close. I think considering how the final part of the round went, I think both of us were awestruck because we were all thinking that it might end up making them win, but Team Eternus is giving us surprises one after another. What do you think of it, EK? Indeed, they are in for a comeback. एक ही राउंड बचा है यहाँ पे, ज़्यादा इकोनॉमी भी अवेलेबल नहीं है. एक बुलडॉग, एक स्पेक्टर, 3 राइफल्स यहाँ पे टीम टीएम के पास डिफेंड करने को, एंड एक फास्ट बीट एक हमको देखने को मिलेगा. वेल आई थिंक कोई भी प्लेयर वहाँ पे रिवील नहीं हुआ है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है. फेड के यहाँ पे यूटिलिटीज आते हुए एक प्लेयर का इन्फो वो निकाल लेंगे. इनफैक्ट दूसरे प्लेयर का भी इन्फो निकाल चुके हैं. यहाँ पे थोड़ा सा फंस चुके हैं. आइस कोल्ड और नेड में आके ही किल हो जाएंगे. इसी के साथ फेड अपना नाइट फॉर अल्टीमेट इन्वेस्ट करते हुए माइटी गोइंग फॉरवर्ड. वेल दैट इज गोइंग टू बी अ मिस्टेक एज किलुआ इज रेडी टू वेलकम हिम राइट देन एंड देयर. बट फेड इज ट्राइंग टू स्टॉप एवरीवन. यहाँ पे थोड़ा सा इन्फो निकाल रहे हैं. 4v4 रीटेक सिचुएशन है और टीटी यहाँ पे अपना अल्टीमेट यूज करते हुए किचन की तरफ. एंड डेविक इज गोइंग फॉरवर्ड. ही विल टेक हिम डाउन. ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए जा रहे हैं इस क्रूशियल मोमेंट पे. और इसी के साथ रिकॉन की तरफ देख रहे थे. डेविक उनके ऊपर भी एक किल निकाल लेंगे. यूबी गेटिंग अ ब्यूटीफुल फ्रैग, बट यहाँ पे वॉल के पीछे डिफ्यूज किया जा रहा है. नो, यूबी विल इंटरप्ट हिम. ही विल टेक हिम डाउन. किलो उनके ऊपर एक किल निकाल लेंगे एंड डेविक टेक्स द लास्ट प्लेयर डाउन. और इसी के साथ कंफर्म करेंगे अपनी फाइनल की एंट्री. Yes, and I have to say, like, we expected some extra rounds here, but what we get to see is that Team TM goes to final, and so with this we get to see Killua, who was lacking behind in the beginning, but now he is on the top. Like, I think those extra time made him really angry and frustrated, and for that reason he is coming on the top. So GG guys, thank you so much for streaming here. Thanks so much for joining us. AK, would you like to say something here? Well, indeed, it was a really close match. First map 13-11, second map, well, it was a pretty decent lead, but then again, last map 13-11, once again, you know, पैसा वसूल मोमेंट यहाँ पे मैं कहूँगा इसको. और इनफैक्ट एक सेमीफाइनल के लिए काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस हमको दोनों ही टीम्स की तरफ से देखने को मिला. While I probably have a few announcements to make, well, one of them is going to be that the second semi-final, if I'm not wrong, has been forfeited by one of the teams because of unavailability of the players, if I'm not wrong. तो yes, जो दूसरी टीम है उनको डायरेक्ट टिकट मिलेगा फाइनल की तरफ से, जो कि टिकट यहाँ पे टीम टीएम ने इतना ज़्यादा खेलने के बाद अर्न किया है. तो यस, फाइनल्स की टीम जो है हमारी ऑलरेडी डिसाइडेड है, एंड कल हमको वो फाइनल्स देखने को मिलेंगे जो कि और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाले हैं. Yes, absolutely, and make sure that you stay tuned here. The timing will be provided. I think timing will be provided by today itself. So for the finals, we will be announcing everything shortly, and please make sure to subscribe to Assam Senpai Society, who's having this second anniversary here, and on the other hand, none other than Kai RJ server, who's having the first year anniversary. So make sure to join them as well. With Indeed. Okay, so people, I would just like to thank AK and Ethereus for the amazing casting duo and giving us an amazing time with them, all the 3 matches. And yeah, every single one of them were actually quite intense. And thank you, both of you, to keeping the intensity alive through your casting. So yeah, we'll see you guys tomorrow in the finals.
So, yeah, thanks for sticking by. Thanks for dropping by. And yeah, good night. See you tomorrow. Good night, guys. This is AK614 signing off. Ciao, guys.